जाएगा। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में इस वक्त पिच रिपोर्ट आ चुकी है, टास्क की अपडेट भी आ चुकी है और दोनों टीमों के प्लेइंग 11 भी यहां पर अनाउंस हो चुके हैं। तो पाकिस्तान चैंपियंस कप का पहला क्वालिफायर मुकाबला इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा और इसके लिए मोहम्मद रिजवान की टीम मारहोर का सामना शादाबान की टीम पैंथर्स के साथ होगा। क्वालिफायर 1 का जो मुकाबला है वो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा और इस वक्त अपडेट यही है कि थोड़े बहुत बादल का हाईएस्ट टोटल और हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें तो दोस्तों 367 रन का अभी तक का हाईएस्ट टोटल जो है आपको चेज भी करने वाली टीम दोस्तों देखिए। अब बात करेंगे आज के मुकाबले इन दोनों टीम्स के बारे में, जिसमें आपको इन दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लेइंग 11 के साथ साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि इस मैच में दोनों टीम्स की क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली है, कैसे यहाँ पे इनके प्लेयर्स खेलेंगे, कितना स्कोर यहाँ पे जा सकता है दोस्तों, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी आज की पिच रिपोर्ट के बारे में बताएंगे दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार करते हैं, हर रोज हमारे मैच में, हर एक मैच में हमारे साथ दोस्तों लाइव जुड़ते हैं, उसमें आपको आज के मैच के हम की प्लेयर्स के बारे में बताएंगे जिनको आपने अपनी खुद की फैंटेसी टीम में ऐड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के मैच की ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग की टीम क्या होने वाली है। तो सभी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों आप सभी से बोलूंगा कि जो आज हमारे चैनल में पहली बार हमारे साथ जुड़ा है दोस्तों, और अगर आप चाहते हो कि इस फैंटेसी की दुनिया में आपका जितना भी लॉस हुआ है दोस्तों, उस लॉस को आज कवर अप कर प्रॉफिट में लेकर आए दोस्तों, तो आपको यही बोलूंगा कि हमारे चैनल को सबसे पहले जाकर चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ छोटा सा आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन पे भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बता दूं आपको, इससे फायदा आपका ये होने वाला है कि हम यहाँ पे आपके लिए हर रोज मैच से पहले मैच की रिपोर्ट्स, पिच प्रेडिक्शंस, फैंटेसी टीम और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैच के रिगार्डिंग, हम हर रोज दोस्तों आपके लिए मैच से पहले लेकर आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से मिल पाए, जिससे आपको आने वाले मैचेस में पूरी तैयारी के साथ आप यहाँ पे डट पाएं और बड़ी से बड़ी विनिंग जीत पाएं, तो दोस्तों आपको यही बोलूँगा कि नीचे अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन पे ऑल कर लीजिए, और साथ में हमारे हर एक मुकाबले की हर एक रिपोर्ट्स के बारे में बढ़िया तरीके से जानने के लिए भी दोस्तों हमारे साथ जुड़े। अब बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे मैच की तरफ दोस्तों, तो दोनों टीम्स की अब सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें अगर पहले बात करें हमारे मरखोर्स की तरफ से दोस्तों जो प्लेइंग 11 रहेगी, उसमें आपको ओपनिंग करने के लिए आज यहाँ पे फकर जमान के साथ दोस्तों बता दें कि मोहम्मद अब्दुल समाद दोस्तों नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे आपके लिए मोहम्मद रिजवान रहने वाले हैं जो कि कैप्टन और साथ साथ में विकेट कीपर रहने वाले हैं। उनके बाद आगा सलमान का नाम रहेगा, फिर कामरान गुलाम का, उसके बाद इफ्तिकार अहमद, फिर यहाँ पे मोहम्मद फैजन रहेंगे, फिर नसीम शाह का नाम आता है, फिर अकीफ जावेद रहेंगे, शाहनवाज दहानी, और सबसे एंड में जाहिद महमूद का दोस्तों नाम नजर आएगा। तो ये बता दूं कि आपको मरखोर्स टीम का आज जो है दोस्तों प्लेइंग 11 नजर आएगी। दूसरी तरफ बात करें हमारी पैंथर्स टीम के बारे में दोस्तों, तो उनकी तरफ से ओपनिंग करने के लिए सैम अयूब के साथ अब्दुल वाहिद बंगलजाई दोस्तों नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे अजान ओवैस दोस्तों आने वाले हैं। चौथे नंबर पे उस्मान खान विकेट कीपर आएंगे। पांचवें नंबर पे हैदर अली। छठे नंबर पे कप्तान शादाब खान आएंगे। सातवें नंबर पे मुबस्सर खान। आठवें नंबर पे मोहम्मद हसनैन। नौवें नंबर पे आपको मोहम्मद जीशान। 10वें नंबर पे उसामा मीर, और 11वें और आखिरी नंबर पे आपको अमाद भट्ट दोस्तों नजर आने वाले हैं। तो बिल्कुल आज के मैच की दोनों टीम्स की जो प्लेइंग 11 है आप सभी को बता दूं कि आज के लिए आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस मैच की हमारी स्मॉल लीग की टीम के बारे में और सेशन रिपोर्ट्स के बारे में दोस्तों। तो बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिकफ्लिक्स फैंटेसी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में या फिर नीचे आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे या फिर मैं लाइव चैट में प्रोवाइड कर देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां आपको बता दूं इस मैच के एक्सचेंज रेट्स, सेशन रिपोर्ट्स, बनी बनाई फैंटेसी टीम, जिसमें आपको ऑलरेडी हमने स्मॉल लीग की टीम हमारी टीम ने आपको शेयर कर दी है,
बाकी रही बात इस मैच के सेशन रिपोर्ट्स की, जिसमें आपको हर 10 आवर्स के बाद जो है दोस्तों सेशंस की रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में हमारी टेलीग्राम टीम प्रोवाइड करेगी। और साथ साथ में हमारे जो एक्सचेंज के रेट्स होंगे दोस्तों कि कहाँ पे कब किस टाइम पे कितने पे लगाना है, कितने पे खाना है, ये सब की सब रिपोर्ट्स आपको एक बहुत सब बोल सकते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज टीम आपके लिए बिल्कुल बैक टू बैक प्रोवाइड करती है। और इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में ये सेशन रिपोर्ट्स है। तो इस सर्विस का फ़ायदा उठाओ, अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर आज के मैच की जितनी भी रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शन के साथ सेशन रिपोर्ट्स में बढ़िया से बढ़िया विनिंग जीतने के लिए तैयार हो जाओ। पढ़ते हैं यहाँ पे, अब मैच की बात कर रहे थे दोस्तों, तो अब बात करेंगे दोनों टीम्स की फॉर्म के बारे में दोस्तों। जिसमें अगर बात करें पहले अगर वुल्व्स टीम की दोस्तों, तो अभी तक बता दूं इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेल चुकी है वुल्व्स की टीम, जिनमें उन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला जो कि लास्ट मुकाबला बिल्कुल लॉयंस के साथ रहा था उनमें उनको हार देखने को नजर आई थी। बट पैंथर्स की बात करें तो दोस्तों उन्होंने पहला मुकाबला जो कि बिल्कुल बता सकता हूं कि मरखोर्स के खिलाफ जो खेला था, बिल्कुल इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला वो हारा था। उसके बाद बैक टू बैक विंस के साथ आपको हर एक मुकाबले में पैंथर्स की टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों वापसी करती हुई नजर आई है। बट अगर देखें दोस्तों पॉइंट्स टेबल की तरफ, तो देख सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल में आपको ये नजर आ ही रहा होगा कि दोस्तों दोनों ही टीम्स की अगर बात करें तो पहले नंबर पे आपको हमारी मरखोर्स की टीम दोस्तों नजर आ रही है, जिन्होंने 38 पॉइंट दोस्तों 4 मैचेस में कमाए हैं, 3 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा है। बट अगर रेटिंग्स की बात करें, जिस तरीके से हमारी मरखोर्स टीम ने दोस्तों इस सीजन में बता दूं कि अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़े बड़े अंतर से दोस्तों मैच जीते हैं, जिससे बोल सकते हैं कि आज के मुकाबले में भी हमें मरखोर्स टीम से एक बड़ी उम्मीद रहेगी मुकाबला जीतने की। पर दूसरी तरफ पैंथर्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पे है 34 पॉइंट के साथ। देखना बस यही रहेगा दोस्तों कि दोनों टीम्स के पॉइंट्स के हिसाब से दोस्तों कौन सी टीम जो है पहली क्वालिफाई होती है दोस्तों, टीम जो कि फाइनल्स में सीधे जाती है। दूसरी टीम जो होगी दोस्तों आप सभी को बता दूं कि वो बिल्कुल क्वालिफाई 2 में जाएगी, जो कि एलिमिनेटर जो यहाँ पे जो एलिमिनेटर हमारा कल मैच होने वाला है उनके साथ हमारा दोस्तों क्वालिफाई 2 मुकाबला होगा। तो देखना बस यही रहने वाला है दोस्तों कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जो है दोस्तों फाइनल्स में पहुंचती है। आपसे बस यही बोलेंगे दोस्तों कि अगर आप अपनी फेवरेट टीम मरखोर्स की टीम जो कि मोहम्मद रिजवान यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बिल्कुल कप्तान मरखोर्स के हमारे मोहम्मद रिजवान, वो जल्दी से जल्दी अपनी टीम को जितना हो सके सपोर्ट करने के लिए वोट करें। और दूसरी तरफ पैंथर्स के कप्तान शदाब खान के लिए और पैंथर्स की टीम को जो सपोर्ट करता है दोस्तों, वो भी यहाँ पे वोटिंग कर कर अपनी पैंथर्स टीम को जल्दी से जल्दी वोट करें। और चैट पे एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि ये वनडे मुकाबले बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रही है। तो आपसे बस एक छोटी सी दरखास्त है कि जो इस मुकाबले में पाकिस्तान की सपोर्ट पे है दोस्तों, एक बार चैट पे पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखे। और साथ साथ में अपनी फेवरेट टीम या फिर मरखोर्स या फिर पैंथर्स उनको भी सपोर्ट करने के लिए चैट पे एक बार अपनी टीम का नाम लिखें, जिससे हम यहाँ पे आपके मैसेजेस कमेंट्स को पढ़ पाए और आपको भी बढ़िया से बढ़िया शाउट आउट दे पाए। बाकी अगर बात करें इस मुकाबले की तरफ, तो दोस्तों अब बात आती है फॉर्म के बाद दोनों टीम्स की इस वेन्यू में अभी तक कैसे परफॉर्मेंस रही है दोस्तों। जिसमें अगर पहले बात करें हमारी बिल्कुल मरखोर्स टीम के बारे में, तो लास्ट के अगर इस मरखोर्स टीम के 4 मुकाबलों की तरफ नजर मारे तो 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जो हैं स्टेडियम में उन्होंने जीते हैं। और साथ साथ में बता दूं कि उनका स्कोर जो है बिल्कुल 298 रन्स का एवरेज स्कोर और 347 रन्स का आपको हाईएस्ट स्कोर दोस्तों देखने को नजर आया। बट पैंथर्स की बात करें तो दोस्तों वो भी 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं, बट एवरेज स्कोर की बात करें तो 285 और हाईएस्ट स्कोर 344 का रहा है। तो रनों के हिसाब से देखें तो दोस्तों बोल सकते हैं कि हमारी मरखोर्स की टीम आज के मैच में फेवरेट है, जिसमें बॉलर से लेकर बल्लेबाज हर एक बहुत ही स्टार बल्लेबाज आज जो है मरखोर्स टीम से खेल रहा है। आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें दोस्तों आज के इस शानदार बड़े मुकाबले में। बाकी रही बात इस मैच की, तो बता दूं ये मुकाबला फैसलाबाद की इकबाल स्टेडियम ग्राउंड में हो रहा है दोस्तों, जहां पे इस पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। अब बात करें इस मुकाबले के बाद आज के मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में,
तो वो भी आपको यहाँ पे हम पिच रिपोर्ट बताएंगे। बट उससे पहले जैसे कि बताया, जिन जिन ने यहाँ पे हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, जो इस मैच की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस के बारे में मैच से पहले जानना चाहते हैं और आने वाले सभी मैचेस की भी आपको रिपोर्ट्स इसी तरीके से आपको अगर मैच से पहले जाननी है तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ छोटा सा बेल आइकन जो है दोस्तों दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी दबाएं और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, जिससे हम आने वाले सभी मैचेस की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस के लिए आपको आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन में आए और उस नोटिफिकेशन की मदद से आप हमारे साथ हर रोज़ जुड़ पाएँ और हर एक मुकाबले की बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट जानकर बड़ी से बड़ी विनिंग जीत पाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात कर रहे थे आज के मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में दोस्तों, तो बता दूं आज की पिच जो है बहुत ही शानदार पिच है दोस्तों, जिसमें आपको बैटिंग सरफेस पिच दोस्तों जरूर नजर आएगी। साथ साथ मैं बता सकता हूं कि आपको कि एक फ्लैट सरफेस पिच है दोस्तों, बैट्समैन के लिए तो अच्छी है ही है, जिससे अगर बोले तो बड़े शॉट्स लगाने में भी आसानी जो है बैट्समैन को रहेगी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों आज के मुकाबले में ज़्यादा विकेट्स लेने में कामयाब हो सकते हैं स्पिनर्स के मुकाबले, क्योंकि फ्लैट सरफेस पिच है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा टर्न नहीं दिखेगा स्पिन बॉलर्स के लिए, जिससे अगर बोले तो फास्ट बॉलर्स यहाँ पे बोलें तो नई गेंद के साथ थोड़ा सा इम्पैक्ट खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे बॉलर्स जो हैं दोस्तों बैट्समैन के लिए। बट ओवरऑल बात करूं तो स्कोर जो है दोस्तों एक हाई स्कोरिंग टारगेट यहाँ पे जाने वाला है, जिससे बोल सकते हैं कि टॉस जीतकर जिस भी टीम ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी की दोस्तों, वो बता सकता हूँ इस मैच के बीच में पहले इनिंग में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है और दूसरी टीम को ऑलरेडी बता दें कि प्रेशर में डाल सकता है कि जब उनको चेज करने की बारी आए, क्योंकि लेटर ऑन यहाँ पे जो है दोस्तों ग्राउंड भी गीला हो जाता है और ग्राउंड गीले होने की वजह से दोस्तों ग्राउंड शॉटें यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी, जैसे आपको ऑलरेडी मुकाबलों में नजर आया। और अभी तक दोस्तों स्टेडियम में ज़्यादा रिकॉर्ड भी यही रहा है कि चेजिंग करने वाली टीम इस मुकाबले को और आने वाले सभी मुकाबले जितने होते हैं उसमें हारी ही है। तो आज भी यही बोलूँगा दोस्तों कि ऐसा ही हो जिससे हम यहाँ पे आज के मैच में कांटे की टक्कर दिखे। रही बात स्कोर की बात करूं तो दोस्तों स्कोर हमारा 300 का आंकड़ा पार जरूर होगा, आपको बता दूं आज के मैच में स्कोर जो होने वाला है। बाकी रही बात आपको टॉस की प्रेडिक्शन के बारे में अगर जानना है दोस्तों एक्यूरेट तरीके से, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारी टेलीग्राम टीम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करती है। जल्दी से जाकर अभी के भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि ये जो सब्सक्राइब और लाइक बटन है, बता दो इसके लिए आपके 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले, बट इससे ये कि हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। तो प्लीज़ नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि आने वाले सभी मैचेस में आपको बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट्स हमारे थ्रू मिल पाए और आप भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़कर दोस्तों बड़ी से बड़ी विनिंग जीत पाएँ। तो जल्दी यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आज 17,000 सब्सक्राइबर गोल के टारगेट को कंप्लीट करने में कुछ ही दूर हैं। तो अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, जिससे हम यहाँ पे आज 20,000 सब्सक्राइबर गोल को फटाफट से कंप्लीट कर पाएं। बाकी रही बात इस मुकाबले की दोस्तों, तो अगली रिपोर्ट आने वाली है आज के मैच के हमारे की प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं, जिनको आपने अपनी फैंटेसी टीम में ऐड करना ही करना, और साथ में आज की मैच की ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग की टीम के रहने वाली है। तो इस सभी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूं, बट उससे पहले मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूं कि हमारा एक भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि टॉस कितने बजे होगा। तो दोस्तों बता दूं अभी टॉस नहीं हुआ, मैच हमारा पाकिस्तान टाइम 3 बजे और बिल्कुल बता सकता हूं कि हमारे इंडिया टाइम 3:30 के करीब मुकाबला होगा। तो बोल सकते हैं कि टॉस आपको 3 बजे पाकिस्तान टाइम पे देखने को नजर 3 बजे हमें इंडिया टाइम पे और 2:30 पे हमें पाकिस्तान में यहाँ पे टॉस देखने को नजर आ सकता है। रही बात अब इस मुकाबले के की प्लेयर्स के बारे में जो पूछ रहा है और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो पूछ रहा है, उससे पहले यही बोलता हूं कि दोस्तों अगर आप अपनी खुद की फैंटेसी टीम बना रहे हैं बहुत बढ़िया, बट एक सलाह जरूर दूंगा दोस्तों कि अपनी फैंटेसी टीम बनाएं। बट आज के मैच में 50-50 ओवर का मैच है दोस्तों, तो आपको ये बोलूंगा कि कम से कम यहाँ पे 4 से 5 फैंटेसी टीम बनाएं मेरी तरह, जिससे आप अच्छे प्रॉफिट में पैसे भी कमा पाए। तो यही सलाह दूंगा कि आज के मैच में अगर जो मैं आपको ये की प्लेयर्स बताऊंगा, इनको भी आपने आज के मैच में अपनी फैंटेसी टीम में ऐड करना ही करना है। रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में जो पूछ रहा है, तो बता दूं आज के मैच में अगर कैप्टन बनाना चाहते हो अपनी पहली टीम की तरफ से, तो दोस्तों मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाएं और वाइस कैप्टन के लिए आप अब्दुल समाद का दोस्तों नाम डाल सकते हैं।
रही बात दूसरी फैंटेसी टीम बना रहे दोस्तों, तो उसमें आप कैप्टन फखर जमान को रखें और वाइस कैप्टन के लिए आप आगा सलमान का दोस्तों नाम डालें। तो ये आज के मैच के आपको दोनों टीम्स हमने उनके कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप अपनी खुद की फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो ये रख सकते हैं। बाकी अगर रही बात इस मैच के की प्लेयर्स के बारे में, तो सबसे पहला नाम यहाँ पे की प्लेयर्स में रहेगा मोहम्मद रिजवान का, जो कि मरखोर्स के कप्तान और विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे और अपनी टीम के लिए इस कंपटीशन में बता सकता हूँ बहुत ही शानदार टीम को दोस्तों सपोर्ट करते हुए और बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हुए नजर आए हमारे मोहम्मद रिजवान, सबसे पहला नाम। दूसरा नाम रहेगा दोस्तों हमारे, बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक और नाम मरखोर्स की तरफ से कामरान गुलाम का, जो कि बता दूं कामरान गुलाम अभी तक बता दे कि लास्ट मुकाबला जो उन्होंने खेला था दोस्तों इसी टीम के खिलाफ, उसमें उन्होंने 110 बॉलों में 113 रन बनाए थे और अपनी टीम को एक शानदार जीत हासिल करवाई थी पैंथर्स के खिलाफ। तो आज के मैच में भी कामरान गुलाम से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। तीसरा नाम अगर बोले तो दोस्तों रहने वाला है आज के मैच में आगा सलमान का, जो कि एक और मरखोर्स के बल्लेबाज दोस्तों आगा सलमान, और साथ साथ में वाइस कैप्टन की भूमिका निभा रहे। अभी तक दोस्तों बता दूं कि 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं हमारे आगा सलमान, अपनी बॉलिंग के अटैक में भी और साथ साथ में रन्स में बोल सकते हैं कि आज के मैच में उम्मीद उनसे बहुत रहने वाली है कि आज एक बड़ा स्कोर बनाए हमारे आगा सलमान। चौथा नाम बताएं तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पैंथर्स की तरफ से नाम आएगा दोस्तों, बिल्कुल बता दूं हमारे पैंथर्स के बल्लेबाज भी जो हैं बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, जिसमें आपको बता सकता हूं कि अगर आज के मैच में देखना चाहते हो कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है तो दोस्तों मैं यहां पे शादाब खान का एज ए ऑलराउंडर नाम डालना चाहूँगा। और साथ साथ में ऑलराउंडर के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पैंथर्स की तरफ और बड़े नाम, तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि हम यहाँ पे सैम अयूब का दोस्तों नाम डाल सकते हैं, मुबस्सर खान का नाम आ सकता है दोस्तों, और सबसे बाद में यहाँ पे हमारे पास मोहम्मद जीशान। तो ये हमारे आज के दोस्तों की प्लेयर्स हैं जिनको आपने अपनी फैंटेसी टीम में ऐड करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। रही बात इस मैच की, हमारी ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग की टीम वो भी आपको आपके साथ शेयर करते हैं, बट उससे पहले जैसे आपको बताया कि दोस्तों अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर अभी कभी सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं दोस्तों। बता दो ये लाइक और छोटा सा ये जो सब्सक्राइब बटन है आपके लिए बस दोस्तों कुछ नहीं है, बट हमारी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, जिससे आने वाले सभी मैचेस की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस आपके नज़रिए से दोस्तों बढ़िया तरीके से पता चल पाए। रही बात अब इस मैच के हमारे की प्लेयर्स के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता चुका की प्लेयर्स के बारे में, जिनने भी नहीं जाना वो भी यहाँ पे ना घबराएं, आपको ये सारी रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शन एक बार फिर से बताऊंगा। बट अभी के लिए यही बोलूंगा कि दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहो, जिससे आपको मैच की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस को अच्छे तरीके से हम बता पाएं। रही बात आज के मैच की हमारी ड्रीम 11 टीम दोस्तों, तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे हमारी आज की ड्रीम 11 टीम दोस्तों नजर आ रही होगी, जिसमें आपको विकेट कीपर में हमने 2 नाम मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान का दोस्तों नाम डाला है। बात करें बैट्समैन की तरफ से दोस्तों, तो हमारे पास बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कामरान गुलाम का दोस्तों नाम डाला था, साथ साथ में फखर जमान, उसके बाद सैम अयूब का नाम आया था। बात करें ऑलराउंडर में तो दोस्तों फिर से आपको 3 नाम नजर आएंगे ऑलराउंडर में भी, जिसमें आपको आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद और मुबस्सर खान का दोस्तों नाम नजर आएगा। रही बात बॉलिंग अटैक में तो हमारे पास उसामा मीर, साथ साथ में मोहम्मद हसनैन और सबसे एंड में हमें यहाँ पे जाहिद महमूद का दोस्तों नाम नजर आया। तो जल्दी से जाकर अभी कभी देख सकते हो कि हमारे आज की जो ड्रीम 11 टीम है इसको फटाफट से नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। साथ साथ में अगर कैप्टन के बारे में पूछ रहे हैं तो कैप्टन आप यहाँ पे आगा सलमान और वाइस कैप्टन के लिए मुबस्सर खान का दोस्तों नाम डालें। तो ये आज के मैच की हमारी दोस्तों ड्रीम 11 टीम आ चुकी है। जिन ने भी अभी तक यहाँ पे कोई भी डाउट कुछ भी है दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, क्योंकि मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे इस मैच के बीच में रोमांच देखने को नजर आएगा, साथ साथ में कांटे की टक्कर का मुकाबला है दोस्तों। दोनों ही टीम्स बहुत ही मजबूत इस सीजन में दोस्तों, जिससे बोले तो आज के मैच में अगर बताऊं दोस्तों तो यही बोलूंगा कि आज का मैच जो है दोस्तों मुझे जहां तक लगता है मरखोर्स इस मुकाबले को जीतकर अपने आप को फाइनल में क्वालिफाई करवाने वाली है। रही बात अगर इस मैच की, अब ग्रैंड लीग की टीम आपके साथ डिस्कस कर ले दोस्तों, जल्दी से आपके सामने देख रहा होगा, जिसमें देख सकते हो कि हमने अपनी ग्रैंड लीग की टीम में भी विकेट कीपर 2 ही रखे हैं, जिसमें आपको मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान नजर आएंगे। बात करें बैटिंग में तो 3 नाम आते हैं, जिसमें आपको कामरान गुलाम,
फ़खर जमान और सैम अयूब का नाम नजर आएगा। ऑलराउंडर में हमारे पास आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, अमाद भट्ट और मुबस्सर खान का नाम। और सबसे एंड में हमारे पास बॉलिंग अटैक में मोहम्मद हसनैन के साथ हमें यहाँ पे जाहिद महमूद का दोस्तों नाम नजर आता है। तो ये आज के मैच की दोस्तों हमारी आ चुकी है ग्रैंड लीग की टीम, जिसमें अगर कैप्टन की बात करें तो आगा सलमान को कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए हमारे पास सैम अयूब का दोस्तों नाम नजर आता है। तो जल्दी से इस मुकाबले की जितनी जल्दी हो सके दोस्तों हमारी रिपोर्ट्स को, हमारी प्रेडिक्शंस को, हमारी जो आपको टीम्स मिल रही है इनको नोट करना बिल्कुल ना भूलें, कॉपी पेन हाथ में पकड़ कर रखें। और रही बात अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कुछ भी अगर जानना है दोस्तों, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारी टेलीग्राम टीम आपको प्रोवाइड करते रहेगी। साथ साथ में अगर आपको इस मैच की कोई भी यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे लाइव चैट में जाकर आपके सभी के नाम पढ़ूं और आपके बड़ा शाउट आउट देकर आपके क्वेश्चंस या डाउट के आंसर भी बढ़िया तरीके से दे पाऊं। तो जल्दी से जाकर चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल करवा रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे आने वाले सभी मैचेस की सारी रिपोर्ट्स इसी तरीके से आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कर पाए। तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बगैर दोस्तों एक बार फिर से आपको इस मैच की सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताते थे। और साथ में जो जो हमारे साथ यहाँ पे मुकाबले में नए जुड़े हैं आप सभी को बोलूंगा, पहले दोस्तों एक बार चैट के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आज का ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का नजर आएगा, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जो है दोस्तों बिल्कुल आज के मुकाबले को अपना जीतेगी दोस्तों, और साथ में फाइनल्स में जगह बनाएगी। और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों तो देखना यही रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं। आप बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल करना बिल्कुल ना भूलें आज के शानदार और बहुत ही बेहतरीन बड़े मुकाबले में। तो बिल्कुल यहाँ पे एक बार फिर से आपको इस मैच के बारे में बता दें दोस्तों, आज का ये बड़ा मुकाबला क्वालिफायर 1 मुकाबला चैंपियंस वनडे कप 2024 का दोस्तों, जो कि मरखोर्स और पैंथर्स के बीच में बिल्कुल पाकिस्तान टाइम 3 बजे और इंडिया 3:30 के करीब ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पे आज के बहुत ही बड़े मुकाबले की तरफ दोस्तों, जो कि बता दो आपको कि पाकिस्तान चैंपियंस वनडे कप का क्वालिफायर 1 मुकाबला रहेगा। तो अभी तक दोस्तों इस टूर्नामेंट में आप सभी को पता है कि ये दो बड़ी टीम्स जो हैं दोस्तों, हमारी मरखोर्स और पैंथर्स की टीम ने दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है दोस्तों, जिसमें अगर दोनों ही कप्तानों की बात करें तो अपनी टीम के लिए बोल सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार दोस्तों अपनी कप्तानी का भी यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया है दोस्तों। तो अब बात करें आज के मुकाबले की तरफ, तो दोस्तों ये चैंपियंस कप का पहला क्वालिफायर मुकाबला जो कि इन दो टॉप टीम्स में दोस्तों खेला जाएगा। मुकाबले की बात करें तो दोस्तों मुकाबला फैसलाबाद की ग्राउंड इकबाल स्टेडियम में 3:30 के करीब ये बता दूं कि मुकाबला शुरू हो जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान टाइम की दोस्तों, ये मुकाबला 3 बजे के करीब शुरू हो जाएगा। और टॉस की बात करें तो हमारे पाकिस्तान टाइम से 2:30 और इंडिया टाइम 3 बजे यहाँ पे आपको टॉस जो है देखने को नजर आएगा। अब बात करेंगे दोनों ही टीम्स की तरफ दोस्तों, तो बता दूं इस टूर्नामेंट के बीच में ऑलरेडी इन दोनों टीम्स का एक बार मुकाबला जो है हो चुका है, जिसमें आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रहा था, जिसमें बता सकता हूं कि यहाँ पे दोस्तों बहुत ही शानदार बड़ा मुकाबला आपको इन दोनों में नजर आया था। पर मुकाबले की बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जो थी दोस्तों, एक बोल सकते हैं कि हमें जीत देखने को नजर आई थी उस मुकाबले के बीच में दोस्तों, जिसमें बता सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा हमें रोमांच देखने को नजर आया था। बट एक तरीके से बोले तो 160 रन से उस मुकाबले को मरखोर्स ने दोस्तों पैंथर्स के खिलाफ जीता भी था। और जिसमें अगर बात करें मैन ऑफ द मैच की तो कामरान गुलाम जो है दोस्तों मरखोर्स की तरफ से, जो बिल्कुल बता दूं 115 रन की उन्होंने नावाद पारी खेली थी और बहुत ही शानदार दोस्तों मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था। अब बात करेंगे आज के मुकाबले की दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो बिल्कुल फैसलाबाद में दोस्तों आज बता दूं आपको कि 30 डिग्री की गर्मी आज देखने को नजर आ सकती है दोस्तों, जिसमें अगर बारिश की बात करें तो बिल्कुल नहीं रहेगी, बट ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं कि आपको ज़रूर देखने को नजर आएगी। और साथ साथ में एक बहुत ही शानदार दिन है दोस्तों, कड़ी धूप आपको ज़रूर नजर आएगी, जिससे बोल सकते हैं कि मुकाबला बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा रोमांच वाला रहने वाला है।
इसके बाद अगर बात करें वेन्यू के बारे में, तो दोस्तों इस वेन्यू में बता दूं कि अभी तक 20 मुकाबले हो चुके हैं इस स्टेडियम के बीच में, जिनमें से 20 मुकाबलों में से जिस भी टीम ने टॉस जीतकर यहाँ पे पहले बैटिंग की है, ज़्यादातर मुकाबले उन्होंने ही जीते हैं। और अभी तक के हाईएस्ट टोटल की बात करूं तो इस ग्राउंड में आपको 371 रन, मतलब कि 371 रन का अभी तक का हाईएस्ट टोटल। और हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें तो दोस्तों 367 रन का अभी तक का हाईएस्ट टोटल जो है आपको चेज भी करने वाली टीम दोस्तों देखिए। अब बात करेंगे आज के मुकाबले इन दोनों टीम्स के बारे में, जिसमें आपको इन दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लेइंग 11 के साथ साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि इस मैच में दोनों टीम्स की क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली है, कैसे यहाँ पे इनके प्लेयर्स खेलेंगे, कितना स्कोर यहाँ पे जा सकता है दोस्तों, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी आज की पिच रिपोर्ट के बारे में बताएंगे दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार करते हैं, हर रोज हमारे मैच में, हर एक मैच में हमारे साथ दोस्तों लाइव जुड़ते हैं, उसमें आपको आज के मैच के हम की प्लेयर्स के बारे में बताएंगे जिनको आपने अपनी खुद की फैंटेसी टीम में ऐड करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के मैच की ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग की टीम क्या होने वाली है। तो सभी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों आप सभी से बोलूंगा कि जो जो आज हमारे चैनल में पहली बार हमारे साथ जुड़ा है दोस्तों, और अगर आप चाहते हो कि इस फैंटेसी की दुनिया में आपका जितना भी लॉस हुआ है दोस्तों, उस लॉस को आज कवर अप कर कर प्रॉफिट में लेकर आए दोस्तों, तो आपको यही बोलूंगा कि हमारे चैनल को सबसे पहले जाकर चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ छोटा सा आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन पे भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बता दूं आपको, इससे फायदा आपका ये होने वाला है कि हम यहाँ पे आपके लिए हर रोज मैच से पहले मैच की रिपोर्ट्स, पिच प्रेडिक्शंस, फैंटेसी टीम और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैच के रिगार्डिंग, हम हर रोज दोस्तों आपके लिए मैच से पहले लेकर आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से मिल पाए, जिससे आपको आने वाले मैचेस में पूरी तैयारी के साथ आप यहाँ पे डट पाएं और बड़ी से बड़ी विनिंग जीत पाएं, तो दोस्तों आपको यही बोलूँगा कि नीचे अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल नोटिफिकेशन पे ऑल कर लीजिए, और साथ में हमारे हर एक मुकाबले की हर एक रिपोर्ट्स के बारे में बढ़िया तरीके से जानने के लिए भी दोस्तों हमारे साथ जुड़े। अब बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे मैच की तरफ दोस्तों, तो दोनों टीम्स की अब सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें अगर पहले बात करें हमारे मरखोर्स की तरफ से दोस्तों जो प्लेइंग 11 रहेगी, उसमें आपको ओपनिंग करने के लिए आज यहाँ पे फकर जमान के साथ दोस्तों बता दें कि मोहम्मद अब्दुल समाद दोस्तों नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे आपके लिए मोहम्मद रिजवान रहने वाले हैं, जो कि कैप्टन और साथ साथ में विकेट कीपर रहने वाले हैं। उनके बाद आगा सलमान का नाम रहेगा, फिर कामरान गुलाम का, उसके बाद इफ्तिकार अहमद, फिर यहाँ पे मोहम्मद फैजन रहेंगे, फिर नसीम शाह का नाम आता है, फिर अकीफ जावेद रहेंगे, शाहनवाज दहानी, और सबसे एंड में जाहिद महमूद का दोस्तों नाम नजर आएगा। तो ये बता दूं कि आपको मरखोर्स टीम का आज जो है दोस्तों प्लेइंग 11 नजर आएगी। दूसरी तरफ बात करें हमारी पैंथर्स टीम के बारे में दोस्तों, तो उनकी तरफ से ओपनिंग करने के लिए सैम अयूब के साथ अब्दुल वाहिद बंगलजाई दोस्तों नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे अजान ओवैस दोस्तों आने वाले हैं। चौथे नंबर पे उस्मान खान विकेट कीपर आएंगे। पांचवें नंबर पे हैदर अली। छठे नंबर पे कप्तान शदाब खान आएंगे। सातवें नंबर पे मुबस्सर खान। आठवें नंबर पे मोहम्मद हसनैन। नौवें नंबर पे आपको मोहम्मद जीशान। 10वें नंबर पे उसामा मीर, और 11वें और आखिरी नंबर पे आपको अमाद भट्ट दोस्तों नजर आने वाले हैं। तो बिल्कुल आज के मैच की दोनों टीम्स की जो प्लेइंग 11 है आप सभी को बता दूं कि आज के लिए आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस मैच की हमारी स्मॉल लीग की टीम के बारे में और सेशन रिपोर्ट्स के बारे में दोस्तों। तो बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिकफ्लिक्स फैंटेसी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में या फिर नीचे आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे या फिर मैं लाइव चैट में प्रोवाइड कर देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां आपको बता दूं इस मैच के एक्सचेंज रेट्स, सेशन रिपोर्ट्स, बनी बनाई फैंटेसी टीम, जिसमें आपको ऑलरेडी हमने स्मॉल लीग की टीम हमारी टीम ने आपको शेयर कर दी है। बाकी रही बात इस मैच के सेशन रिपोर्ट्स की, जिसमें आपको हर 10 ओवर्स के बाद जो है दोस्तों सेशंस की रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में हमारी टेलीग्राम टीम प्रोवाइड करेगी। और साथ साथ में हमारे जो एक्सचेंज के रेट्स होंगे दोस्तों कि कहाँ पे कब किस टाइम पे कितने पे लगाना है, कितने पे खाना है, ये सब की सब रिपोर्ट्स आपको बहुत सब बोल सकते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज टीम आपके लिए बिल्कुल बैक टू बैक प्रोवाइड करती है, और इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल फ्री में ये सेशन रिपोर्ट्स है, तो इस सर्विस का फ़ायदा उठाओ अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर। आज के मैच की जितनी भी रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शन के साथ सेशन रिपोर्ट्स में बढ़िया से बढ़िया विनिंग जीतने के लिए तैयार हो जाओ। पढ़ते हैं यहाँ पे। अब मैच की बात कर रहे थे दोस्तों, तो अब बात करेंगे दोनों टीम्स की फॉर्म के बारे में दोस्तों, जिसमें अगर बात करें पहले अगर वुल्व्स टीम की दोस्तों, तो अभी तक बता दूं इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेल चुकी है वुल्व्स की टीम, जिनमें उन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला जो कि लास्ट मुकाबला बिल्कुल लॉयंस के साथ रहा था उनमें उनको हार देखने को नजर आई थी। बट पैंथर्स की बात करें तो दोस्तों उन्होंने पहला मुकाबला जो कि बिल्कुल बता सकता हूँ कि मरखोर्स के खिलाफ जो खेला था, बिल्कुल इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला वो हारा था। उसके बाद बैक टू बैक विंस के साथ आपको हर एक मुकाबले में पैंथर्स की टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों वापसी करती हुई नजर आई है। बट अगर देखें दोस्तों पॉइंट्स टेबल की तरफ, तो देख सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल में आपको ये नजर आ ही रहा होगा कि दोस्तों दोनों ही टीम्स की अगर बात करें तो पहले नंबर पे आपको हमारी मरखोर्स की टीम दोस्तों नजर आ रही है, जिन्होंने 38 पॉइंट दोस्तों 4 मैचेस में कमाए हैं। 3 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा है। बट अगर रेटिंग्स की बात करें, जिस तरीके से हमारी मरखोर्स टीम ने दोस्तों इस सीजन में बता दो कि अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़े बड़े अंतर से दोस्तों मैच जीते हैं, जिससे बोल सकते हैं कि आज के मुकाबले में भी हमें मरखोर्स टीम से एक बड़ी उम्मीद रहेगी मुकाबला जीतने की। पर दूसरी तरफ पैंथर्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पे है 34 पॉइंट के साथ। देखना बस यही रहेगा दोस्तों कि दोनों टीम्स के पॉइंट्स के हिसाब से दोस्तों कौन सी टीम जो है पहली क्वालिफाई होती है दोस्तों, टीम जो कि फाइनल्स में सीधे जाती है। दूसरी टीम जो होगी दोस्तों आप सभी को बता दूं कि वो बिल्कुल क्वालिफाई 2 में जाएगी, जो कि एलिमिनेटेड जो यहाँ पे जो एलिमिनेटर हमारा कल मैच होने वाला है उनके साथ हमारा दोस्तों क्वालिफाई 2 मुकाबला होगा। तो देखना बस यही रहने वाला है दोस्तों कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जो है दोस्तों फाइनल्स में पहुंचती है। आपसे बस यही बोलेंगे दोस्तों कि अगर आप अपनी फेवरेट टीम मरखोर्स की टीम जो कि मोहम्मद रिजवान यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बिल्कुल कप्तान मरखोर्स के हमारे मोहम्मद रिजवान, वो जल्दी से जल्दी अपनी टीम को जितना हो सके सपोर्ट करने के लिए वोट करें। और दूसरी तरफ पैंथर्स के कप्तान शदाब खान के लिए और पैंथर्स की टीम को जो सपोर्ट करता है दोस्तों, वो भी यहाँ पे वोटिंग कर अपनी पैंथर्स टीम को जल्दी से जल्दी वोट करें। और चैट पे एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि ये वनडे मुकाबले बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रही है। तो आपसे बस एक छोटी सी दरखास्त है कि जो इस मुकाबले में पाकिस्तान की सपोर्ट पे है दोस्तों, एक बार चैट पे पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखे और साथ साथ में अपनी फेवरेट टीम या फिर मरखोर्स या फिर पैंथर्स उनको भी सपोर्ट करने के लिए चैट पे एक बार अपनी टीम का नाम लिखें, जिससे हम यहाँ पे आपके मैसेजेस कमेंट्स को पढ़ पाए और आपको भी बढ़िया से बढ़िया शाउट आउट दे पाए। बाकी अगर बात करें इस मुकाबले की तरफ, तो दोस्तों अब बात आती है फॉर्म के बाद दोनों टीम्स की इस वेन्यू में अभी तक कैसे परफॉर्मेंस रही है दोस्तों। जिसमें अगर पहले बात करें हमारी बिल्कुल मरखोर्स टीम के बारे में, तो लास्ट के अगर इस मरखोर्स टीम के 4 मुकाबलों की तरफ नजर मारे तो 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जो हैं स्टेडियम में उन्होंने जीते हैं। और साथ साथ में बता दूं कि उनका स्कोर जो है बिल्कुल 298 रन का एवरेज स्कोर और 347 रन का आपको हाईएस्ट स्कोर दोस्तों देखने को नजर आया। बट पैंथर्स की बात करें तो दोस्तों वो भी 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं, बट एवरेज स्कोर की बात करें तो 285 और हाईएस्ट स्कोर 344 का रहा है। तो रनों के हिसाब से देखें तो दोस्तों बोल सकते हैं कि हमारी मरखोर्स की टीम आज के मैच में फेवरेट है, जिसमें बॉलर से लेकर बल्लेबाज हर एक बहुत ही स्टार बल्लेबाज आज जो है मरखोर्स टीम से खेल रहा है। आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें और साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें दोस्तों आज के इस शानदार बड़े मुकाबले में। बाकी रही बात इस मैच की, तो बता दूं ये मुकाबला फैसलाबाद की इकबाल स्टेडियम ग्राउंड में हो रहा है दोस्तों, जहां पे इस पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। अब बात करें इस मुकाबले के बाद आज के मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो वो भी आपको यहाँ पे हम पिच रिपोर्ट बताएंगे। बट उससे पहले जैसे कि बताया, जिन ने यहाँ पे हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं जो इस मैच की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस के बारे में मैच से पहले जानना चाहते हैं और आने वाले सभी मैचेस की भी आपको रिपोर्ट्स इसी तरीके से आपको अगर मैच से पहले जाननी है तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ छोटा सा बेल आइकन जो है दोस्तों दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी दबाएं और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, जिससे हम आने वाले सभी मैचेस की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस के लिए आपको आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन में आए
और उस नोटिफिकेशन की मदद से आप हमारे साथ हर रोज जुड़ पाएं और हर एक मुकाबले की बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट जानकर बड़ी से बड़ी विनिंग जीत पाए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात कर रहे थे आज के मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में दोस्तों, तो बता दूं आज की पिच जो है बहुत ही शानदार पिच है दोस्तों, जिसमें आपको बैटिंग सरफेस पिच दोस्तों जरूर नजर आएगी। साथ साथ मैं बता सकता हूँ कि आपको कि एक फ्लैट सरफेस पिच है दोस्तों, बैट्समैन के लिए तो अच्छी है ही है, जिससे अगर बोले तो बड़े शॉट्स लगाने में भी आसानी जो है बैट्समैन को रहेगी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों आज के मुकाबले में ज़्यादा विकेट्स लेने में कामयाब हो सकते हैं स्पिनर्स के मुकाबले, क्योंकि फ्लैट सरफेस पिच है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा टर्न नहीं दिखेगा स्पिन बॉलर्स के लिए, जिससे अगर बोले तो फास्ट बॉलर्स यहाँ पे बोलें तो नई गेंद के साथ थोड़ा सा इम्पैक्ट खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे बॉलर्स जो है दोस्तों बैट्समैन के लिए। बट ओवरऑल बात करूं तो स्कोर जो है दोस्तों एक हाई स्कोरिंग टारगेट यहाँ पे जाने वाला है, जिससे बोल सकते हैं कि टॉस जीतकर जिस भी टीम ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी की दोस्तों, वो बता सकता हूँ इस मैच के बीच में पहले इनिंग में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है और दूसरी टीम को ऑलरेडी कौन बता दें कि प्रेशर में डाल सकता है कि जब उनको चेज करने की बारी है, क्योंकि लेटर ऑन यहाँ पे जो है दोस्तों ग्राउंड भी गीला हो जाता है और ग्राउंड गीले होने की वजह से दोस्तों ग्राउंड शॉटें यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी, जैसे आपको ऑलरेडी मुकाबलों में नजर आया। और अभी तक दोस्तों स्टेडियम में ज़्यादा रिकॉर्ड भी यही रहा है कि चेजिंग करने वाली टीम इस मुकाबले को और आने वाले सभी मुकाबले जितने होते हैं उसमें हारी ही है। तो आज भी यही बोलूँगा दोस्तों कि ऐसा ही हो जिससे हम यहाँ पे आज के मैच में कांटे की टक्कर दिखे। रही बात स्कोर की बात करूं तो दोस्तों स्कोर हमारा 300 का आंकड़ा पार जरूर होगा, आपको बता दूं आज के मैच में स्कोर जो होने वाला है। बाकी रही बात आपको टॉस की प्रेडिक्शन के बारे में अगर जानना है दोस्तों एक्यूरेट तरीके से, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारी टेलीग्राम टीम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करती है। जल्दी से जाकर अभी के भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि ये जो सब्सक्राइब और लाइक बटन है, बता दो इसके लिए आपके 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले, बट इससे ये कि हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। तो प्लीज़ नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि आने वाले सभी मैचेस में आपको बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट्स हमारे थ्रू मिल पाए और आप भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़कर दोस्तों बड़ी से बड़ी विनिंग जीत पाएँ। तो जल्दी यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आज 17,000 सब्सक्राइबर गोल के टारगेट को कंप्लीट करने में कुछ ही दूर है। तो अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, जिससे हम यहाँ पे आज 20,000 सब्सक्राइबर गोल को फटाफट से कंप्लीट कर पाएं। बाकी रही बात इस मुकाबले की दोस्तों, तो अगली रिपोर्ट आने वाली है आज के मैच के हमारे की प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं जिनको आपने अपनी फैंटेसी टीम में ऐड करना ही करना, और साथ में आज की मैच की ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग की टीम के रहने वाली है। तो इस सभी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ कि हमारा एक भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि टॉस कितने बजे होगा। तो दोस्तों बता दूं अभी टॉस नहीं हुआ, मैच हमारा पाकिस्तान टाइम 3 बजे और बिल्कुल बता सकता हूं कि हमारे इंडिया टाइम 3:30 के करीब मुकाबला होगा। तो बोल सकते हैं कि टॉस आपको 3 बजे पाकिस्तान टाइम पे देखने को नजर 3 बजे हमें इंडिया टाइम पे और 2:30 पे हमें पाकिस्तान में यहाँ पे टॉस देखने को नजर आ सकता है। रही बात अब इस मुकाबले के की प्लेयर्स के बारे में जो पूछ रहा है और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो पूछ रहा है, उससे पहले यही बोलता हूँ कि दोस्तों अगर आप अपनी खुद की फैंटेसी टीम बना रहे हैं बहुत बढ़िया, बट एक सलाह जरूर दूंगा दोस्तों कि अपनी फैंटेसी टीम बनाएं। बट आज के मैच में 50-50 ओवर का मैच है दोस्तों, तो आपको ये बोलूंगा कि कम से कम यहाँ पे 4 से 5 फैंटेसी टीम बनाए मेरी तरह, जिससे आप अच्छे प्रॉफिट में पैसे भी कमा पाए। तो यही सलाह दूंगा कि आज के मैच में अगर जो मैं आपको ये की प्लेयर्स बताऊंगा इनको भी आपने आज के मैच में अपनी फैंटेसी टीम में ऐड करना ही करना है। रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में जो पूछ रहा है, तो बता दूं आज के मैच में अगर कैप्टन बनाना चाहते हो अपनी पहली टीम की तरफ से, तो दोस्तों मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाएं और वाइस कैप्टन के लिए आप अब्दुल समाद का दोस्तों नाम डाल सकते हैं। रही बात दूसरी फैंटेसी टीम बना रहे दोस्तों, तो उसमें आप कैप्टन फखर जमान को रखें और वाइस कैप्टन के लिए आप आगा सलमान का दोस्तों नाम डालें। तो ये आज के मैच के आपको दोनों टीम सामने उनके कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप अपनी खुद की फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो ये रख सकते हैं। बाकी अगर रही बात इस मैच के की प्लेयर्स के बारे में, तो सबसे पहला नाम यहाँ पे की प्लेयर्स में रहेगा मोहम्मद रिजवान का, जो कि मरखोर्स के कप्तान और विकेट करते हुए और बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हुए नजर आए हमारे मोहम्मद रिजवान, सबसे पहला नाम।
दूसरा नाम रहेगा दोस्तों हमारे बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक और नाम मरखोर्स की तरफ से कामरान गुलाम का, जो कि बता दूं कामरान गुलाम अभी तक बता दें कि लास्ट मुकाबला जो उन्होंने खेला था दोस्तों इसी टीम के खिलाफ, उसमें उन्होंने 110 बॉलों में 113 रन बनाए थे और अपनी टीम को एक शानदार जीत हासिल करवाई थी पैंथर्स के खिलाफ। तो आज के मैच में भी कामरान गुलाम से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। तीसरा नाम अगर बोले तो दोस्तों रहने वाला है आज के मैच में आगा सलमान का, जो कि एक और मरखोर्स के बल्लेबाज दोस्तों आगा सलमान, और साथ साथ में वाइस कैप्टन की भूमिका निभा रहे हैं। अभी तक दोस्तों बता दूं कि 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं हमारे आगा सलमान, अपनी बॉलिंग के अटैक में भी और साथ साथ में रन्स में बोल सकते हैं कि आज के मैच में उम्मीद उनसे बहुत रहने वाली है कि आज एक बड़ा स्कोर बनाए हमारे आगा सलमान। चौथा नाम बताएं तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पैंथर्स की तरफ से नाम आएगा दोस्तों। बिल्कुल बता दूं हमारे पैंथर्स के बल्लेबाज भी जो हैं बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, जिसमें आपको बता सकता हूं कि अगर आज के मैच में देखना चाहते हो कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है तो दोस्तों मैं यहाँ पे शादाब खान का एज ए ऑलराउंडर नाम डालना चाहूँगा। और साथ साथ में ऑलराउंडर के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पैंथर्स की तरफ और बड़े नाम, तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि हम यहाँ पे सैम अयूब का दोस्तों नाम डाल सकते हैं, मुबस्सर खान का नाम आ सकता है दोस्तों, और सबसे बाद में यहाँ पे हमारे पास मोहम्मद जीशान। तो ये हमारे आज के दोस्तों की प्लेयर्स हैं जिनको आपने अपनी फैंटेसी टीम में ऐड करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। रही बात इस मैच की, हमारी ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग की टीम वो भी आपको आपके साथ शेयर करते हैं, बट उससे पहले जैसे आपको बताया कि दोस्तों अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर अभी कभी सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं दोस्तों। बता दो ये लाइक और छोटा सा ये जो सब्सक्राइब बटन है आपके लिए बस दोस्तों कुछ नहीं है, बट हमारी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, जिससे आने वाले सभी मैचेस की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस आपके नज़रिए से दोस्तों बढ़िया तरीके से पता चल पाए। रही बात अब इस मैच के हमारे की प्लेयर्स के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता चुका की प्लेयर्स के बारे में, जिनने भी नहीं जाना वो भी यहाँ पे ना घबराएं। आपको ये सारी रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शन एक बार फिर से बताऊंगा, बट अभी के लिए यही बोलूंगा कि दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहो, जिससे आपको मैच की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस को अच्छे तरीके से हम बता पाएं। रही बात आज के मैच की हमारी ड्रीम 11 टीम दोस्तों, तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे हमारी आज की ड्रीम 11 टीम दोस्तों नजर आ रही होगी, जिसमें आपको विकेट कीपर में हमने 2 नाम मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान का दोस्तों नाम डाला है। बात करें बैट्समैन की तरफ से दोस्तों, तो हमारे पास बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कामरान गुलाम का दोस्तों नाम डाला था, साथ साथ में फ़खर जमान, उसके बाद सैम अयूब का नाम आया था। बात करें ऑलराउंडर में तो दोस्तों फिर से आपको 3 नाम नजर आएंगे ऑलराउंडर में भी, जिसमें आपको आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद और मुबस्सर खान का दोस्तों नाम नजर आएगा। रही बात बॉलिंग अटैक में तो हमारे पास उसामा मीर, साथ साथ में मोहम्मद हसनैन और सबसे एंड में हमें यहाँ पे जाहिद महमूद का दोस्तों नाम नजर आया। तो जल्दी से जाकर अभी कभी देख सकते हो कि हमारे आज की जो ड्रीम 11 टीम है इसको फटाफट से नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। साथ साथ में अगर कैप्टन के बारे में पूछ रहे हैं तो कैप्टन आप यहाँ पे आगा सलमान और वाइस कैप्टन के लिए मुबस्सर खान का दोस्तों नाम डालें। तो ये आज के मैच की हमारी दोस्तों ड्रीम 11 टीम आ चुकी है। जिन ने भी अभी तक यहाँ पे कोई भी डाउट कुछ भी है दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, क्योंकि मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे इस मैच के बीच में रोमांच देखने को नजर आएगा, साथ साथ में कांटे की टक्कर का मुकाबला दोस्तों। दोनों ही टीम्स बहुत ही मजबूत इस सीजन में दोस्तों, जिससे बोले तो आज के मैच में अगर बताऊं दोस्तों तो यही बोलूँगा कि आज का मैच जो है दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है मरखोर्स इस मुकाबले को जीतकर अपने आप को फाइनल में क्वालिफाई करवाने वाली है। रही बात अगर इस मैच की, अब ग्रैंड लीग की टीम आपके साथ डिस्कस कर लें दोस्तों, जल्दी से आपके सामने देख रहा होगा, जिसमें देख सकते हो कि हमने अपनी ग्रैंड लीग की टीम में भी विकेट कीपर 2 ही रखे हैं, जिसमें आपको मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान नजर आएंगे। बात करें बैटिंग में तो 3 नाम आते हैं, जिसमें आपको कामरान गुलाम, फ़खर जमान और सैम अयूब का नाम नजर आएगा। ऑलराउंडर में हमारे पास आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, अमाद भट्ट और मुबस्सर खान का नाम, और सबसे एंड में हमारे पास बॉलिंग अटैक में मोहम्मद हसनैन के साथ हमें यहाँ पे जाहिद महमूद का दोस्तों नाम नजर आता है। तो ये आज के मैच की दोस्तों हमारी आ चुकी है ग्रैंड लीग की टीम, जिसमें अगर कैप्टन की बात करें तो आगा सलमान को कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए हमारे पास सैम अयूब का दोस्तों नाम नजर आता है। तो जल्दी से इस मुकाबले की जितनी जल्दी हो सके दोस्तों हमारी रिपोर्ट्स को, हमारी प्रेडिक्शंस को, हमारी जो आपको टीम्स मिल रही है इनको नोट करना बिल्कुल ना भूलें, कॉपी पेन हाथ में पकड़ कर रखें
और रही बात अगर आपको फिर भी कोई डाउट कुछ भी अगर जानना है दोस्तों, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारी टेलीग्राम टीम आपको प्रोवाइड करते रहेगी। साथ साथ में अगर आपको इस मैच की कोई भी यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे लाइव चैट में जाकर आपके सभी के नाम पढ़ूं और आपके बड़ा शाउट आउट देकर आपके क्वेश्चंस या डाउट के आंसर भी बढ़िया तरीके से दे पाऊँ। तो जल्दी से जाकर चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल करवा रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे आने वाले सभी मैचेस की सारी रिपोर्ट्स इसी तरीके से आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कर पाए। तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बगैर दोस्तों एक बार फिर से आपको इस मैच की सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताते थे, और साथ में जो जो हमारे साथ यहाँ पे मुकाबले में नए जुड़े हैं आप सभी को बोलूंगा, पहले दोस्तों एक बार चैट के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आज का ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का नजर आएगा, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जो है दोस्तों बिल्कुल आज के मुकाबले को अपना जीतेगी दोस्तों, और साथ में फाइनल्स में जगह बनाएगी। और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों, तो देखना यही रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं। आप बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल करना बिल्कुल ना भूलें आज के शानदार और बहुत ही बेहतरीन बड़े मुकाबले में। तो बिल्कुल यहाँ पे एक बार फिर से आपको इस मैच के बारे में बता दें दोस्तों, आज का ये बड़ा मुकाबला क्वालिफायर 1 मुकाबला चैंपियंस वनडे कप 2024 का दोस्तों, जो कि मरखोर्स और पैंथर्स के बीच में बिल्कुल पाकिस्तान टाइम 3 बजे और इंडिया 3:30 के करीब ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पे आज के बहुत ही बड़े मुकाबले की तरफ दोस्तों, जो कि बता दो आपको कि पाकिस्तान चैंपियंस वनडे कप का क्वालिफायर 1 मुकाबला रहेगा। तो अभी तक दोस्तों इस टूर्नामेंट में आप सभी को पता है कि ये दो बड़ी टीम्स जो हैं दोस्तों, हमारी मरखोर्स और पैंथर्स की टीम ने दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है दोस्तों, जिसमें अगर दोनों ही कप्तानों की बात करें तो अपनी टीम के लिए बोल सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार दोस्तों अपनी कप्तानी का भी यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया है दोस्तों। तो अब बात करें आज के मुकाबले की तरफ, तो दोस्तों ये चैंपियंस कप का पहला क्वालिफायर मुकाबला जो कि इन दो टॉप टीम्स में दोस्तों खेला जाएगा। मुकाबले की बात करें तो दोस्तों मुकाबला फैसलाबाद की ग्राउंड इकबाल स्टेडियम में 3:30 के करीब ये बता दूं कि मुकाबला शुरू हो जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान टाइम की दोस्तों, ये मुकाबला 3 बजे के करीब शुरू हो जाएगा। और टॉस की बात करें तो हमारे पाकिस्तान टाइम से 2:30 और इंडिया टाइम 3 बजे यहाँ पे आपको टॉस जो है देखने को नजर आएगा। अब बात करेंगे दोनों ही टीम्स की तरफ दोस्तों, तो बता दूं इस टूर्नामेंट के बीच में ऑलरेडी इन दोनों टीम्स का एक बार मुकाबला जो है हो चुका है, जिसमें आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रहा था, जिसमें बता सकता हूं कि यहाँ पे दोस्तों बहुत ही शानदार बड़ा मुकाबला आपको इन दोनों में नजर आया था। पर मुकाबले की बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जो थी दोस्तों, एक बोल सकते हैं कि हमें जीत देखने को नजर आई थी उस मुकाबले के बीच में दोस्तों, जिसमें बता सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा हमें रोमांच देखने को नजर आया था। बट एक तरीके से बोले तो 160 रन से उस मुकाबले को मरखोर्स ने दोस्तों पैंथर्स के खिलाफ जीता भी था। और जिसमें अगर बात करें मैन ऑफ द मैच की, तो कामरान गुलाम जो है दोस्तों मरखोर्स की तरफ से, जो बिल्कुल बता दूं 115 रन की उन्होंने नावाद पारी खेली थी और बहुत ही शानदार दोस्तों मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था। अब बात करेंगे आज के मुकाबले की दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो बिल्कुल फैसलाबाद में दोस्तों आज बता दूं आपको कि 30 डिग्री की गर्मी आज देखने को नजर आ सकती है दोस्तों, जिसमें अगर बारिश की बात करें तो बिल्कुल नहीं रहेगी, बट ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं कि आपको ज़रूर देखने को नजर आएगी। और साथ साथ में एक बहुत ही शानदार दिन है दोस्तों, कड़ी धूप आपको ज़रूर नजर आएगी, जिससे बोल सकते हैं कि मुकाबला बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा रोमांच वाला रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करें वेन्यू के बारे में, तो दोस्तों इस वेन्यू में बता दूं कि अभी तक 20 मुकाबले हो चुके हैं इस स्टेडियम के बीच में, जिनमें से 20 मुकाबलों में से जिस भी टीम ने टॉस जीतकर यहां पे पहले बैटिंग की है, ज़्यादातर मुकाबले उन्होंने ही जीते हैं। और अभी तक के हाईएस्ट टोटल की बात करूं तो इस ग्राउंड में आपको 371 रन मतलब कि 371 रन का अभी तक का हाईएस्ट टोटल, और हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें तो दोस्तों 367 रन का अभी तक का हाईएस्ट टोटल जो है आपको चेज भी करने वाली टीम दोस्तों देखिए। अब बात करेंगे आज के मुकाबले इन दोनों टीम्स के बारे में, जिसमें आपको इन दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे।
प्लेइंग 11 के साथ साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि इस मैच में दोनों टीम्स की क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली है, कैसे यहाँ पे इनके प्लेयर्स खेलेंगे, कितना स्कोर यहाँ पे जा सकता है दोस्तों, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी आज की पिच रिपोर्ट के बारे में बताएंगे दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार करते हैं, हर रोज हमारे मैच में, हर एक मैच में हमारे साथ दोस्तों लाइव जुड़ते हैं, उसमें आपको आज के मैच के हम की प्लेयर्स के बारे में बताएंगे जिनको आपने अपनी खुद की फैंटेसी टीम में ऐड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के मैच की ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग की टीम क्या होने वाली है। तो सभी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों आप सभी से बोलूंगा कि जो आज हमारे चैनल में पहली बार हमारे साथ जुड़ा है दोस्तों, और अगर आप चाहते हो कि इस फैंटेसी की दुनिया में आपका जितना भी लॉस हुआ है दोस्तों, उस लॉस को आज कवर अप कर प्रॉफिट में लेकर आए दोस्तों, तो आपको यही बोलूंगा कि हमारे चैनल को सबसे पहले जाकर चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ छोटा सा आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन पे भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बता दूं आपको, इससे फायदा आपका ये होने वाला है कि हम यहाँ पे आपके लिए हर रोज मैच से पहले मैच की रिपोर्ट्स, पिच प्रेडिक्शंस, फैंटेसी टीम और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैच के रिगार्डिंग, हम हर रोज दोस्तों आपके लिए मैच से पहले लेकर आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से मिल पाए, जिससे आपको आने वाले मैचेस में पूरी तैयारी के साथ आप यहाँ पे डट पाएं और बड़ी से बड़ी विनिंग जीत पाएं, तो दोस्तों आपको यही बोलूँगा कि नीचे अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन पे ऑल कर लीजिए, और साथ में हमारे हर एक मुकाबले की हर एक रिपोर्ट्स के बारे में बढ़िया तरीके से जानने के लिए भी दोस्तों हमारे साथ जुड़े। अब बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे मैच की तरफ दोस्तों, तो दोनों टीम्स की अब सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें अगर पहले बात करें हमारे मरखोर्स की तरफ से दोस्तों जो प्लेइंग 11 रहेगी, उसमें आपको ओपनिंग करने के लिए आज यहाँ पे फकर जमान के साथ दोस्तों बता दें कि मोहम्मद अब्दुल समाद दोस्तों नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे आपके लिए मोहम्मद रिजवान रहने वाले हैं, जो कि कैप्टन और साथ साथ में विकेट कीपर रहने वाले हैं। उनके बाद आगा सलमान का नाम रहेगा, फिर कामरान गुलाम का, उसके बाद इफ्तिकार अहमद, फिर यहाँ पे मोहम्मद फैजन रहेंगे, फिर नसीम शाह का नाम आता है, फिर अकीफ जावेद रहेंगे, शाहनवाज दहानी, और सबसे एंड में जाहिद महमूद का दोस्तों नाम नजर आएगा। तो ये बता दूं कि आपको मरखोर्स टीम का आज जो है दोस्तों प्लेइंग 11 नजर आएगी। दूसरी तरफ बात करें हमारी पैंथर्स टीम के बारे में दोस्तों, तो उनकी तरफ से ओपनिंग करने के लिए सैम अयूब के साथ अब्दुल वाहिद बंगलजाई दोस्तों नजर आएंगे। तीसरे नंबर पे अजान ओवैस दोस्तों आने वाले हैं। चौथे नंबर पे उस्मान खान विकेट कीपर आएंगे। पांचवें नंबर पे हैदर अली। छठे नंबर पे कप्तान शदाब खान आएंगे। सातवें नंबर पे मुबस्सर खान। आठवें नंबर पे मोहम्मद हसनैन। नौवें नंबर पे आपको मोहम्मद जीशान। 10वें नंबर पे उसामा मीर, और 11वें और आखिरी नंबर पे आपको अमाद बट दोस्तों नजर आने वाले हैं। तो बिल्कुल आज के मैच की दोनों टीम्स की जो प्लेइंग 11 है आप सभी को बता दूं कि आज के लिए आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस मैच की हमारी स्मॉल लीग की टीम के बारे में और सेशन रिपोर्ट्स के बारे में दोस्तों। तो बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिकफ्लिक्स फैंटेसी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में या फिर नीचे आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे या फिर मैं लाइव चैट में प्रोवाइड कर देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां आपको बता दूं इस मैच के एक्सचेंज रेट्स, सेशन रिपोर्ट्स, बनी बनाई फैंटेसी टीम, जिसमें आपको ऑलरेडी हमने स्मॉल लीग की टीम हमारी टीम ने आपको शेयर कर दी है। बाकी रही बात इस मैच के सेशन रिपोर्ट्स की, जिसमें आपको हर 10 आवर्स के बाद जो है दोस्तों सेशंस की रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में हमारी टेलीग्राम टीम प्रोवाइड करेगी। और साथ साथ में हमारे जो एक्सचेंज के रेट्स होंगे दोस्तों कि कहाँ पे कब किस टाइम पे कितने पे लगाना है, कितने पे खाना है, ये सब की सब रिपोर्ट्स आपको बहुत सब बोल सकते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज टीम आपके लिए बिल्कुल बैक टू बैक प्रोवाइड करती है। और इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में ये सेशन रिपोर्ट्स है। तो इस सर्विस का फायदा उठाओ, अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर आज के मैच की जितनी भी रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शन के साथ सेशन रिपोर्ट्स में बढ़िया से बढ़िया विनिंग जीतने के लिए तैयार हो जाओ। पढ़ते हैं यहाँ पे, अब मैच की बात कर रहे थे दोस्तों, तो अब बात करेंगे दोनों टीम्स की फॉर्म के बारे में दोस्तों। जिसमें अगर बात करें पहले अगर वुल्व्स टीम की दोस्तों, तो अभी तक बता दूं इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेल चुकी है वुल्व्स की टीम, जिनमें उन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला जो कि लास्ट मुकाबला बिल्कुल लॉयंस के साथ रहा था उनमें उनको हार देखने को नजर आई थी। बट पैंथर्स की बात करें तो दोस्तों उन्होंने पहला मुकाबला जो कि बिल्कुल बता सकता हूं कि मरखोर्स के खिलाफ जो खेला था
बिल्कुल इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला वो हारा था। उसके बाद बैक टू बैक विंस के साथ आपको हर एक मुकाबले में पैंथर्स की टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों वापसी करती हुई नजर आई है। बट अगर देखें दोस्तों पॉइंट्स टेबल की तरफ, तो देख सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल में आपको ये नजर आ ही रहा होगा कि दोस्तों दोनों ही टीम्स की अगर बात करें तो पहले नंबर पे आपको हमारी मरखोर्स की टीम दोस्तों नजर आ रही है, जिन्होंने 38 पॉइंट दोस्तों 4 मैचेस में कमाए हैं। 3 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा है। बट अगर रेटिंग्स की बात करें, जिस तरीके से हमारी मरखोर्स टीम ने दोस्तों इस सीजन में बता दूं कि अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़े बड़े अंतर से दोस्तों मैच जीते हैं, जिससे बोल सकते हैं कि आज के मुकाबले में भी हमें मरखोर्स टीम से एक बड़ी उम्मीद रहेगी मुकाबला जीतने की। पर दूसरी तरफ पैंथर्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पे है 34 पॉइंट के साथ। देखना बस यही रहेगा दोस्तों कि दोनों टीम्स के पॉइंट्स के हिसाब से दोस्तों कौन सी टीम जो है पहली क्वालिफाई होती है दोस्तों, टीम जो कि फाइनल्स में सीधे जाती है। दूसरी टीम जो होगी दोस्तों आप सभी को बता दूं कि वो बिल्कुल क्वालिफाई 2 में जाएगी, जो कि एलिमिनेटर जो यहाँ पे जो एलिमिनेटर हमारा कल मैच होने वाला है उनके साथ हमारा दोस्तों क्वालिफाई 2 मुकाबला होगा। तो देखना बस यही रहने वाला है दोस्तों कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जो है दोस्तों फाइनल्स में पहुंचती है। आपसे बस यही बोलेंगे दोस्तों कि अगर आप अपनी फेवरेट टीम मरखोर्स की टीम जो कि मोहम्मद रिजवान यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बिल्कुल कप्तान मरखोर्स के हमारे मोहम्मद रिजवान, वो जल्दी से जल्दी अपनी टीम को जितना हो सके सपोर्ट करने के लिए वोट करें। और दूसरी तरफ पैंथर्स के कप्तान शदाब खान के लिए और पैंथर्स की टीम को जो सपोर्ट करता है दोस्तों, वो भी यहाँ पे वोटिंग कर अपनी पैंथर्स टीम को जल्दी से जल्दी वोट करें। और चैट पे एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि ये वनडे मुकाबले बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रही है। तो आपसे बस एक छोटी सी दरखास्त है कि जो इस मुकाबले में पाकिस्तान की सपोर्ट पे है दोस्तों, एक बार चैट पे पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखे और साथ साथ में अपनी फेवरेट टीम या फिर मरखोर्स या फिर पैंथर्स उनको भी सपोर्ट करने के लिए चैट पे एक बार अपनी टीम का नाम लिखें, जिससे हम यहाँ पे आपके मैसेजेस कमेंट्स को पढ़ पाए और आपको भी बढ़िया से बढ़िया शाउट आउट दे पाए। बाकी अगर बात करें इस मुकाबले की तरफ तो दोस्तों अब बात आती है फॉर्म के बाद दोनों टीम्स की इस वेन्यू में अभी तक कैसे परफॉर्मेंस रही है दोस्तों, जिसमें अगर पहले बात करें हमारी बिल्कुल मरखोर्स टीम के बारे में, तो लास्ट के अगर इस मरखोर्स टीम के 4 मुकाबलों की तरफ नजर मारे तो 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जो हैं स्टेडियम में उन्होंने जीते हैं। और साथ साथ में बता दूं कि उनका स्कोर जो है बिल्कुल 298 रन्स का एवरेज स्कोर और 347 रन्स का आपको हाईएस्ट स्कोर दोस्तों देखने को नजर आया। बट पैंथर्स की बात करें तो दोस्तों वो भी 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं, बट एवरेज स्कोर की बात करें तो 285 और हाईएस्ट स्कोर 344 का रहा है। तो रनों के हिसाब से देखें तो दोस्तों बोल सकते हैं कि हमारी मरखोर्स की टीम आज के मैच में फेवरेट है, जिसमें बॉलर से लेकर बल्लेबाज हर एक बहुत ही स्टार बल्लेबाज आज जो है मरखोर्स टीम से खेल रहा है। आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नाम लिखना बिल्कुल ना बोले, और साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें दोस्तों आज के इस शानदार बड़े मुकाबले में। बाकी रही बात इस मैच की तो बता दूं ये मुकाबला फैसलाबाद की इकबाल स्टेडियम ग्राउंड में हो रहा है दोस्तों, जहां पे इस पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। अब बात करें इस मुकाबले के बाद आज के मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो वो भी आपको यहाँ पे हम पिच रिपोर्ट बताएंगे। बट उससे पहले जैसे कि बताया, जिन ने यहाँ पे हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं जो इस मैच की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस के बारे में मैच से पहले जानना चाहते हैं और आने वाले सभी मैचेस की भी आपको रिपोर्ट्स इसी तरीके से आपको अगर मैच से पहले जाननी है तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ छोटा सा बेल आइकन जो है दोस्तों दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी दबाएं और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, जिससे हम आने वाले सभी मैचेस की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस के लिए आपको आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन में आए और उस नोटिफिकेशन की मदद से आप हमारे साथ हर रोज़ जुड़ पाएँ और हर एक मुकाबले की बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट जानकर बड़ी से बड़ी विनिंग जीत पाए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात कर रहे थे आज के मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में दोस्तों, तो बता दूं आज की पिच जो है बहुत ही शानदार पिच है दोस्तों, जिसमें आपको बैटिंग सरफेस पिच दोस्तों जरूर नजर आएगी। साथ साथ मैं बता सकता हूं कि आपको कि एक फ्लैट सरफेस पिच है दोस्तों, बैट्समैन के लिए तो अच्छी है ही है, जिससे अगर बोले तो बड़े शॉट्स लगाने में भी आसानी जो है बैट्समैन को रहेगी।
बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों आज के मुकाबले में ज़्यादा विकेट्स लेने में कामयाब हो सकते हैं स्पिनर्स के मुकाबले, क्योंकि फ्लैट सरफेस पिच है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा टर्न नहीं दिखेगा स्पिन बॉलर्स के लिए, जिससे अगर बोले तो फास्ट बॉलर्स यहाँ पे बोलें तो नई गेंद के साथ थोड़ा सा इम्पैक्ट खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे बॉलर्स जो हैं दोस्तों बैट्समैन के लिए। बट ओवरऑल बात करूं तो स्कोर जो है दोस्तों एक हाई स्कोरिंग टारगेट यहाँ पे जाने वाला है, जिससे बोल सकते हैं कि टॉस जीतकर जिस भी टीम ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी की दोस्तों, वो बता सकता हूँ इस मैच के बीच में पहले इनिंग में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है और दूसरी टीम को ऑलरेडी बता दें कि प्रेशर में डाल सकता है कि जब उनको चेज करने की बारी है, क्योंकि लेटर ऑन यहाँ पे जो है दोस्तों ग्राउंड भी गीला हो जाता है और ग्राउंड गीले होने की वजह से दोस्तों ग्राउंड शॉटें यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी, जैसे आपको ऑलरेडी मुकाबलों में नजर आया। और अभी तक दोस्तों स्टेडियम में ज़्यादा रिकॉर्ड भी यही रहा है कि चेजिंग करने वाली टीम इस मुकाबले को और आने वाले सभी मुकाबले जितने होते हैं उसमें हारी ही है। तो आज भी यही बोलूँगा दोस्तों कि ऐसा ही हो जिससे हम यहाँ पे आज के मैच में कांटे की टक्कर दिखे। रही बात स्कोर की बात करूं तो दोस्तों स्कोर हमारा 300 का आंकड़ा पार जरूर होगा, आपको बता दूं आज के मैच में स्कोर जो होने वाला है। बाकी रही बात आपको टॉस की प्रेडिक्शन के बारे में अगर जानना है दोस्तों एक्यूरेट तरीके से, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारी टेलीग्राम टीम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करती है। जल्दी से जाकर अभी के भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि ये जो सब्सक्राइब और लाइक बटन है, बता दूं इसके लिए आपके 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले, बट इससे ये कि हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। तो प्लीज़ नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि आने वाले सभी मैचेस में आपको बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट्स हमारे थ्रू मिल पाए और आप भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़कर दोस्तों बड़ी से बड़ी विनिंग जीत पाएँ। तो जल्दी यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आज 17,000 सब्सक्राइबर गोल के टारगेट को कंप्लीट करने में कुछ ही दूर हैं। तो अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, जिससे हम यहाँ पे आज 20,000 सब्सक्राइबर गोल को फटाफट से कंप्लीट कर पाएं। बाकी रही बात इस मुकाबले की दोस्तों, तो अगली रिपोर्ट आने वाली है आज के मैच के हमारे की प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं जिनको आपने अपनी फैंटेसी टीम में ऐड करना ही करना, और साथ में आज की मैच की ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग की टीम के रहने वाली है। तो इस सभी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ कि हमारा एक भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि टॉस कितने बजे होगा। तो दोस्तों बता दूं अभी टॉस नहीं हुआ, मैच हमारा पाकिस्तान टाइम 3 बजे, और बिल्कुल बता सकता हूं कि हमारे इंडिया टाइम 3:30 के करीब मुकाबला होगा। तो बोल सकते हैं कि टॉस आपको 3 बजे पाकिस्तान टाइम पे देखने को नजर 3 बजे हमें इंडिया टाइम पे और 2:30 पे हमें पाकिस्तान में यहाँ पे टॉस देखने को नजर आ सकता है। रही बात अब इस मुकाबले के की प्लेयर्स के बारे में जो पूछ रहा है और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो पूछ रहा है, उससे पहले यही बोलता हूं कि दोस्तों अगर आप अपनी खुद की फैंटेसी टीम बना रहे हैं बहुत बढ़िया, बट एक सलाह जरूर दूंगा दोस्तों कि अपनी फैंटेसी टीम बनाएं। बट आज के मैच में 50-50 ओवर का मैच है दोस्तों, तो आपको ये बोलूंगा कि कम से कम यहाँ पे 4 से 5 फैंटेसी टीम बनाएं मेरी तरह, जिससे आप अच्छे प्रॉफिट में पैसे भी कमा पाए। तो यही सलाह दूंगा कि आज के मैच में अगर जो मैं आपको ये की प्लेयर्स बताऊंगा, इनको भी आपने आज के मैच में अपनी फैंटेसी टीम में ऐड करना ही करना है। रही बात कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में जो पूछ रहा है, तो बता दूं आज के मैच में अगर कैप्टन बनाना चाहते हो अपनी पहली टीम की तरफ से, तो दोस्तों मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाएं और वाइस कैप्टन के लिए आप अब्दुल समाद का दोस्तों नाम डाल सकते हैं। रही बात दूसरी फैंटेसी टीम बना रहे दोस्तों, तो उसमें आप कैप्टन फकर जमान को रखें और वाइस कैप्टन के लिए आप आगा सलमान का दोस्तों नाम डालें। तो ये आज के मैच के आपको दोनों टीम सामने उनके कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप अपनी खुद की फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो ये रख सकते हैं। बाकी अगर रही बात इस मैच के की प्लेयर्स के बारे में, तो सबसे पहला नाम यहाँ पे की प्लेयर्स में रहेगा मोहम्मद रिजवान का, जो कि मरखोर्स के कप्तान और विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे और अपनी टीम के लिए इस कंपटीशन में बता सकता हूँ बहुत ही शानदार टीम को दोस्तों सपोर्ट करते हुए और बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हुए नजर आए हमारे मोहम्मद रिजवान, सबसे पहला नाम। दूसरा नाम रहेगा दोस्तों हमारे बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक और नाम मरखोर्स की तरफ से कामरान गुलाम का, जो कि बता दूं कामरान गुलाम अभी तक बता दें कि लास्ट मुकाबला जो उन्होंने खेला था दोस्तों इसी टीम के खिलाफ, उसमें उन्होंने 110 बॉलों में 113 रन बनाए थे और अपनी टीम को एक शानदार जीत हासिल करवाई थी पैंथर्स के खिलाफ। तो आज के मैच में भी कामरान गुलाम से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। तीसरा नाम अगर बोले तो दोस्तों रहने वाला है आज के मैच में आगा सलमान का,
जो कि एक और मरखोर्स के बल्लेबाज दोस्तों आगा सलमान और साथ साथ में वाइस कैप्टन की भूमिका निभा रहे। अभी तक दोस्तों बता दूं कि 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं हमारे आगा सलमान, अपनी बॉलिंग के अटैक में भी और साथ साथ में रन्स में बोल सकते हैं कि आज के मैच में उम्मीद उनसे बहुत रहने वाली है कि आज एक बड़ा स्कोर बनाए हमारे आगा सलमान। चौथा नाम बताएं तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पैंथर्स की तरफ से नाम आएगा दोस्तों। बिल्कुल बता दूं हमारे पैंथर्स के बल्लेबाज भी जो हैं बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, जिसमें आपको बता सकता हूं कि अगर आज के मैच में देखना चाहते हो कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है तो दोस्तों मैं यहाँ पे शादाब खान का एज ए ऑलराउंडर नाम डालना चाहूँगा। और साथ साथ में ऑलराउंडर के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पैंथर्स की तरफ और बड़े नाम तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि हम यहाँ पे सैम अयूब का दोस्तों नाम डाल सकते हैं, मुबस्सर खान का नाम आ सकता है दोस्तों, और सबसे बाद में यहाँ पे हमारे पास मोहम्मद जीशान। तो ये हमारे आज के दोस्तों की प्लेयर्स हैं जिनको आपने अपनी फैंटेसी टीम में ऐड करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। रही बात इस मैच की, हमारी ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग की टीम वो भी आपको आपके साथ शेयर करते हैं, बट उससे पहले जैसे आपको बताया कि दोस्तों अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर अभी के अभी सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं दोस्तों। बता दूं ये लाइक और छोटा सा ये जो सब्सक्राइब बटन है आपके लिए बस दोस्तों कुछ नहीं है, बट हमारी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, जिससे आने वाले सभी मैचेस की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस आपके नज़रिए से दोस्तों बढ़िया तरीके से पता चल पाए। रही बात अब इस मैच के हमारे की प्लेयर्स के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता चुका की प्लेयर्स के बारे में, जिनने भी नहीं जाना वो भी यहाँ पे ना घबराएं। आपको ये सारी रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शन एक बार फिर से बताऊंगा, बट अभी के लिए यही बोलूंगा कि दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहो, जिससे आपको मैच की रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शंस को अच्छे तरीके से हम बता पाएं। रही बात आज के मैच की हमारी ड्रीम 11 टीम दोस्तों, तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे हमारी आज की ड्रीम 11 टीम दोस्तों नजर आ रही होगी, जिसमें आपको विकेट कीपर में हमने 2 नाम मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान का दोस्तों नाम डाला है। बात करें बैट्समैन की तरफ से दोस्तों, तो हमारे पास बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कामरान गुलाम का दोस्तों नाम डाला था, साथ साथ में फखर जमान, उसके बाद सैम अयूब का नाम आया था। बात करें ऑलराउंडर में तो दोस्तों फिर से आपको 3 नाम नजर आएंगे ऑलराउंडर में भी, जिसमें आपको आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद और मुबस्सर खान का दोस्तों नाम नजर आएगा। रही बात बॉलिंग अटैक में तो हमारे पास उसामा मीर, साथ साथ में मोहम्मद हसनैन और सबसे एंड में हमें यहाँ पे जाहिद महमूद का दोस्तों नाम नजर आया। तो जल्दी से जाकर अभी कभी देख सकते हो कि हमारी आज की जो ड्रीम 11 टीम है इसको फटाफट से नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। साथ साथ में अगर कैप्टन के बारे में पूछ रहे हैं तो कैप्टन आप यहाँ पे आगा सलमान और वाइस कैप्टन के लिए मुबस्सर खान का दोस्तों नाम डालें। तो ये आज के मैच की हमारी दोस्तों ड्रीम 11 टीम आ चुकी है। जिन ने भी अभी तक यहाँ पे कोई भी डाउट कुछ भी है दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, क्योंकि मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे इस मैच के बीच में रोमांच देखने को नजर आएगा, साथ साथ में कांटे की टक्कर का मुकाबला दोस्तों। दोनों ही टीम्स बहुत ही मजबूत इस सीजन में दोस्तों, जिससे बोले तो आज के मैच में अगर बताऊं दोस्तों तो यही बोलूंगा कि आज का मैच जो है दोस्तों मुझे जहां तक लगता है मरखोर्स इस मुकाबले को जीतकर अपने आप को फाइनल में क्वालिफाई करवाने वाली है। रही बात अगर इस मैच की, अब ग्रैंड लीग की टीम आपके साथ डिस्कस कर ले दोस्तों, जल्दी से आपके सामने देख रहा होगा, जिसमें देख सकते हो कि हमने अपनी ग्रैंड लीग की टीम में भी विकेट कीपर 2 ही रखे हैं, जिसमें आपको मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान नजर आएंगे। बात करें बैटिंग में तो 3 नाम आते हैं, जिसमें आपको कामरान गुलाम, फखर जमान और सैम अयूब का नाम नजर आएगा। ऑलराउंडर में हमारे पास आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, अमाद भट्ट और मुबस्सर खान का नाम, और सबसे एंड में हमारे पास बॉलिंग अटैक में मोहम्मद हसनैन के साथ हमें यहाँ पे जाहिद महमूद का दोस्तों नाम नजर आता है। तो ये आज के मैच की दोस्तों हमारी आ चुकी है ग्रैंड लीग की टीम, जिसमें अगर कैप्टन की बात करें तो आगा सलमान को कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए हमारे पास सैम अयूब का दोस्तों नाम नजर आता है। तो जल्दी से इस मुकाबले की जितनी जल्दी हो सके दोस्तों हमारी रिपोर्ट्स को, हमारी प्रेडिक्शंस को, हमारी जो आपको टीम्स मिल रही है इनको नोट करना बिल्कुल ना भूलें, कॉपी पेन हाथ में पकड़ कर रखें। और रही बात अगर आपको फिर भी कोई डाउट कुछ भी अगर जानना है दोस्तों तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारी टेलीग्राम टीम आपको प्रोवाइड करते रहेगी। साथ साथ में अगर आपको इस मैच की कोई भी यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे लाइव चैट में जाकर आपके सभी के नाम पढ़ूं और आपके बड़ा शाउट आउट देकर आपके क्वेश्चंस या डाउट के आंसर भी बढ़िया तरीके से दे पाऊँ। तो जल्दी से जाकर चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे
ऑल करवा रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे आने वाले सभी मैचेस की सारी रिपोर्ट्स इसी तरीके से आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कर पाए। तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बगैर दोस्तों एक बार फिर से आपको इस मैच की सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताते थे, और साथ में जो जो हमारे साथ यहाँ पे मुकाबले में नए जुड़े हैं आप सभी को बोलूंगा, पहले दोस्तों एक बार चैट के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आज का ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट का नजर आएगा, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जो है दोस्तों बिल्कुल आज के मुकाबले को अपना जीतेगी दोस्तों, और साथ में फाइनल्स में जगह बनाएगी। और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों तो देखना यही रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं। आप बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल करना बिल्कुल ना भूलें आज के शानदार और बहुत ही बेहतरीन बड़े मुकाबले में। तो बिल्कुल यहाँ पे एक बार फिर से आपको इस मैच के बारे में बता दें दोस्तों, आज का ये बड़ा मुकाबला क्वालिफायर 1 मुकाबला चैंपियंस वनडे कप 2024 का दोस्तों, जो कि मरखोर्स और पैंथर्स के बीच में बिल्कुल पाकिस्तान टाइम 3 बजे और इंडिया 3:30 के करीब ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पे आज के बहुत ही बड़े मुकाबले की तरफ दोस्तों, जो कि बता दो आपको कि पाकिस्तान चैंपियंस वनडे कप का क्वालिफायर 1 मुकाबला रहेगा। तो अभी तक दोस्तों इस टूर्नामेंट में आप सभी को पता है कि ये दो बड़ी टीम्स जो हैं दोस्तों, हमारी मरखोर्स और पैंथर्स की टीम ने दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है दोस्तों, जिसमें अगर दोनों ही कप्तानों की बात करें तो अपनी टीम के लिए बोल सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार दोस्तों अपनी कप्तानी का भी यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया है दोस्तों। तो अब बात करें आज के मुकाबले की तरफ तो दोस्तों ये चैंपियंस कप का पहला क्वालिफायर मुकाबला जो कि इन दो टॉप टीम्स में दोस्तों खेला जाएगा। मुकाबले की बात करें तो दोस्तों मुकाबला फैसलाबाद की ग्राउंड इकबाल स्टेडियम में 3:30 के करीब ये बता दूं कि मुकाबला शुरू हो जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान टाइम की दोस्तों ये मुकाबला 3 बजे के करीब शुरू हो जाएगा, और टॉस की बात करें तो हमारे पाकिस्तान टाइम से 2:30 और इंडिया टाइम 3 बजे यहाँ पे आपको टॉस जो है देखने को नजर आएगा। अब बात करेंगे दोनों ही टीम्स की तरफ दोस्तों, तो बता दूं इस टूर्नामेंट के बीच में ऑलरेडी इन दोनों टीम्स का एक बार मुकाबला जो है हो चुका है, जिसमें आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रहा था, जिसमें बता सकता हूं कि यहाँ पे दोस्तों बहुत ही शानदार बड़ा मुकाबला आपको इन दोनों में नजर आया था। बट मुकाबले की बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जो थी दोस्तों, एक बोल सकते हैं कि हमें जीत देखने को नजर आई थी उस मुकाबले के बीच में दोस्तों, जिसमें बता सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा हमें रोमांच देखने को नज़र आया था। बट एक तरीके से बोले तो 160 रन से उस मुकाबले को मरखोर्स ने दोस्तों पैंथर्स के खिलाफ जीता भी था। और जिसमें अगर बात करें मैन ऑफ द मैच की तो कामरान गुलाम जो हैं दोस्तों मरखोर्स की तरफ से, जो बिल्कुल बता दूं 115 रन की उन्होंने नवाज Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Waiting. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. Oh dear, played on. A hint of misfortune, and that is out. It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. A big opportunity. They've worked hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get big runs on the board. Waiting. Couldn't get it through the field. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. There's a run here, surely. Seems slightly odd not just to take the single that was on offer there. A great over, no runs conceded, a wicket as well, putting enormous pressure on the batters. Javid, the left-arm medium bowler, is coming into the attack from the north end.
Good batting, get an opportunity to score and take it. Guptill gets off the mark. Waiting. Straight to the fielder. Just threw the shot too early. Wait. Up. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. Wait there. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. Yep. Massive edge. Keepers. There'll be one run here for them. The edge was very close to going to hands. They're fortunate to pick up their first runs. Drives and misses everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. Wait there. Doesn't beat the infield. Maybe they didn't pick it up. Very late on that shot. Not a very smart shot. Got nothing onto it in the end. Yep. Chance to run two. Ballers in. Nicely ran, working the ball away into the gaps to find the easy single. Beaten on the drive. Wazim with a superb delivery. Got them coming forward looking to drive, but can't manage to catch the edge. Javid from the north end. Yep. 4 runs, square of the wicket. Excellent shot. Onto the front foot early, placed it perfectly into the gap. Timed it nicely for 4 more. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Yep. Well placed. Should get a single. Good return there, back from the deep. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Finds the edge. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Huge edge.
Misses out there on the short and wide one. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Waiting. Thought it got past them, but a fantastic dive to cut it off. Wait there. The over comes to an end. Not many runs coming from it. Both sides need to inject some life into this game. There'll be runs here. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. Yep. Timed that brilliantly. It was just a little bit too full and it was beautifully timed. Just need to keep it simple. Line and length, around about off stump, and that'll force the mistake. Thick edge. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. A wonderful delivery to get the edge. They've got to keep hammering away at that spot time and again. That's going a long way. What a shot that is. Off the front foot, hit it with all the power and elegance of a batter right at the top of their game. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Yep. Good shot. It's found the gap. It was in the gap pretty much all the way along the ground to the boundary rope. Off to a good start now. Consecutive boundaries in this over. I wonder what plans they'll come up with to slow this batting. That's the over. The Gladiators are 32 for 1. Waiting. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Maybe they didn't pick that up very late on the shot. Wait on it. Just threw the shot too early. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. That was a good strong throw back in, right over the stumps. I'm surprised they didn't go for a third. Would have been a very simple run. Waiting. Finds the fielder with that shot. Big edge. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot ball. The Gladiators seem happy to take 2 runs off that over. It's a 34 for 1. Wait.
A little late on that, no run scored. Nice solid defensive shot. Negated the spin well then, got nicely on top of the bounce. Wait. Good piece of fielding to stop some runs. Good cricket all round, good delivery, timed well, but straight to the fielder. Wait there. Wait. Wazim ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. Waiting. Didn't hit that well, very late playing that shot. Just a little bit wide, well picked up, and let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third. Nice shot, runs possible. Waiting. Can't get that outside the ring field. End of the over, and again it's a good one for the bowling side, not letting batters build any momentum. Great shot, at least one on offer. Puts in a slightly shorter ball, and it's seen so early. Got onto the back foot quickly and just pushes away behind square. Waiting. A little late on that. No run scored. That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. Ease through the field. There'll be runs here. Punched it off the back foot for some runs.
they'll get at least one. Oh my, that's just flown off the middle. Wow, power off the front foot, goes all the way. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Power and precision in that shot. A really good 50 partnership. These two are looking strong, and it's going to take something special to break it up. Amir, the pace bowler, coming into the attack. Got that away nicely. No trouble at all to punch it away to the boundary for 4. A poor delivery. Wasim, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Misses everything. Great work behind the stumps. Save some runs with that dive. Well, that was just an awesome delivery. Whiz past the batsman. The umpire says that's the first of 2. Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. Middle that one. Great timing. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. We've reached the end of the fielding restrictions. There'll be changes to the field, I imagine. 2 extra fielders are now allowed outside the circle. Tahir, the spinner, coming into the attack. Quick onto that in the infield. Short and wide. Did well to get some bat on that. I, for one, reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. Wait. Loud shout. Out. Yeah. Good catch. This innings just cut short before it really flourished. It looked like it was moving to a big score, but it's not to be. Ahmed won't have the pressure of facing up just yet. The nerves will be rattling a bit while they're at the non-striker's end.
Good spot there, making it difficult to get away. That's the end of the over. 1 run coming from it. The Gladiators are 59 for 2. Wow, that's missed the lot. A reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play than this. Poor batting. Straight to the fielder. Trouble. Oh, gone. The trudge back to the pavilion. A good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. It's a long way to walk out here just to walk straight back. They'll just want to get this first one behind them and then push on. A lovely shorter ball. Just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. Waiting. Wait on it. Bowler. Yep. Massive edge. There'll be 1 run here for them. The Gladiators get through another over, only 1 from it. Yep. A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. Couldn't get it through the field. Just threw the shot too early. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Just can't seem to get the ball away. That's the 3rd dot. Well-directed short ball, sways out of the way. Doesn't beat the infield. Gee, they're bowling well at the moment. They complete another very good over. Amir from the north end. Yep. Decisive running might have got them to. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. Got right in behind it. And they're away and nicely off the mark.
No runs on that occasion, got into position nicely, just too early on the shot, couldn't find a gap. Poor fielding, chose the wrong end entirely for what should have been a simple run out. Great shot through the gap. Perfect timing. Bowler, bowler. Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. Another really good over comes to an end. The batters just haven't been able to cut loose in the last few overs. Edge, what a ball! Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Yep. There'll be runs here. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. A little late on that. No runs scored. Wait on. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. Waiting. Solid defence, very compact. Right on top of the spin, keeps it out well. A miserly over is completed, just one off it. Cutting comes back into the attack. The runs have slowed and they're a good option to continue tying these batters down. Yep. Well placed, should get a single. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. Wait on. Waiting.
Drives and misses everything. Cutting with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. That's great fielding. That ball was flying. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. Cutting has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. Yep. It was slightly shorter, but it was seen early. Got onto the back foot quickly. Just pushed it away behind square. Wait on it. Yep. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Yep. Couldn't have hit that any better. A brilliant throw-in from the deep caps off what was a fabulous piece of fielding. Wait on. Finds the fielder with that shot. Yep. That's right off the meat of the bat. That ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. Waking. Misses out there on the short and wide one. Yep. Good shot. A beauty. Only a touch short and punished. Beautiful shot. Guptill has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Yep. That's right out of the middle of the bat. That's just timed brilliantly. He moves closer to 50. Going to need something special to get this wicket. Guptill is really starting to get on top of this bowling. May need a few changes to halt this momentum. Cutting just needs to continue finding good spots now. Bit of shape on the way through. Guptill happy just to watch it go by. Waiting. Good piece of fielding to stop some runs. Yep. Edged, unplayable. Playing all their shots in that over. A very expensive over. Amir, the left-arm medium fast bowler, is coming into the attack from the south end.
Ease through the field. There'll be runs here. Waiting. Yep. Wait on it. Can't get that outside the ring field. Waiting. Yep. End of the over, 3 runs coming from it. The Gladiators are 94 for 3. Yep. Nice shot, runs possible. And that brings up the batsman's half century. That shot brings up the half century. Beautiful batting display, very solid. I think this is just the start. Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. Waiting. A little late on that, no run scored. Misses everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. Yep. Quick onto that in the infield. Could that be out? Looks so. A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of a wicket. Nawaz takes guard. Been in pretty good touch lately. You wouldn't want to let them get away early with some easy boundaries. Wait. Overstepping, just a little too eager on that delivery. Didn't keep the foot behind the line. Just a slight tweak to the run-up will sort it out. Beaten on the drive. Just the sort of delivery you want as a follow-up to a no ball. That sees the completion of the over. A good one too. Not many opportunities to score.
And gone. That's a fantastic catch. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. Lots of pressure coming into bat. Will have to wait, though, to face their first ball. Wow, that's missed a lot. A reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play than this. Poor batting. Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. Wait. Straight to the fielder. No runs on that occasion. Got into position nicely. Just too early on the shot and couldn't find the gap. Wait on. A little late on that, no runs scored. Wait. Great shot. At least one on offer. Just threw the shot too early. End of the over. The Gladiators, 98 for 5. Wait. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. They'll get at least one. There'll be one run here for them. And with that, they're off the mark. Yep. Nice running between the wickets, clipping the pads, not the bat though. Yep. Into the gap. Nice shot. Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind.
you'd feel that his best years still. Low. Just guided towards the leg side for a single. Did you read that, Googly? He's really rushed into that stroke. Good move, because well documented if the car struggles against wrist spin. Shadab. He's captaining the side as well, Shadab. Took rest in the last game for Lake City Panthers, but his team won nevertheless. But speaking of captains, we saw some heroics from Shaheen Afridi last night. Faisal, 2 nights ago. Yeah, he found his best form with the ball, but then incredibly he decided to come on to bat after that knee injury that he had. But then So the word from PCB about Shaheen Afridi that we have received is that he's okay. So good news for the fans. We'll just like to inform them that his injury was on the right knee, but his surgery was on the right knee. I beg your pardon. The injury that he got was on the left knee, but seems like he is walking perfectly fine now. He's under observation. He'll be taking part in the training today, and they'll judge whether he's good to play. He was at the connection camp yesterday as well, and he looked in good spirits. That's 12 overs gone, 44 for 4. $44 for 4 in need of a partnership. UMT Markhors. And picking up on what Hijab was mentioning about Shaheen Afridi, he actually got hit on the pad, so it wasn't any danger in that, but he'd been fielding close in the circle around the rough edges of the square, and he was throwing himself around, so he had a little bruise on his knee from that fielding effort, and when that ball hit him on the pad, it was right on that spot, so the pain was excruciating, but no long-term damage. So yeah, he's been observed and he's good to go. Good effort from the fielder on that position, denied them a single. What these two batters have to do is keep rotating the strike, get the flow of runs going, even if they cannot find the boundaries. Edged. Despairing drive from Usman. Nervy prod. Another very good delivery. Left Iftikhar with the seam. And that edge just eluded Usman Khan's dive. Well, we were just talking about finding boundaries, and Iftikhar said, watch me. Found one. A bit of a nervy one, but living on the edge, Iftikhar Ahmed. Grunt from young Ali Raza, putting all his effort in. He's ducking for cover when that throw came, but it was way away from him.
Allied Bank, Aapke Dil Mein Hamara account. Leading through innovation. Bank of the Year 2023 Pakistan. Third year in a row by the Banker UK. Big banker for UMT Markhors, Kamran Ghulam, was dismissed cheaply today. Beautifully bowled, wide of the crease, angling in. Iftikhar squared up, perplexed. This is the talent of this young man, Ali Raza. More illustrious, more experienced campaigner. Iftikhar had no clue. Yeah, usually he's good against pace, but right now what Ali Raza is doing is producing some good bounce and some good movement of the pitch. And he's giving them the stare as well. That is lovely to see from such a young fast bowler. And you've got two experienced batters on the crease, but that is not moving him at all. It's really an aggressive character, Ali Raza. Slip in. Once again, hitting the splice hard. That ball seemed to be hitting the bat harder than what Iftikhar is expecting. Deceptively quick, young Ali Raza. 13 gone. UMT Markhors 49 for 4. And time for some drinks here at the Iqbal Stadium. First game of the playoffs at Beria Town Champions Cup here at the Iqbal Stadium, Faisalabad. We're looking at the fall of wicket so far. That was the first one to go, Hasibullah. Ali Raza with express pace and a little movement, just tempting him to go, and then it was Kamran Ghulam, the top scorer, against Mohammad Hasnain, the top wicket taker of the tournament, straight onto the pads, and this was on the very first delivery. Made Rizwan go, chased the ball straight to the keeper, and then Mohammad Hasnain kept the attack onto the UMT Markhors. This was the dismissal of Fakhr Zaman. So UMT Markhors are in a spot of bother in this first qualifier. They've lost the top 4 batters. Salman Ali Agha and Iftikhar Ahmed are still out there, and 14 and 13 respectively. 7 extras so far
in this innings. Shadab will continue. His battle with Iftikhar will continue. Panthers are charged up, and why not? 4 big wickets onto the stumps. Quicker through the air, Shadab. $50 up for UMT Markhors. Great facility for the fans at the ground. Inverix Solar Energy. Now you can charge your mobile phones or tablets through Inverix Solar Energy While watching the match. And it seems like the Lake City Panthers are charged as well. Yeah, despite it being cloudy, not much sun, but they've really come out of the blocks really quickly. Just saw that wickets package, and it was brilliant the way Ali Raza got the first wicket, the kick and bounce he got. 50 up, a lot more needed for UMT Markhors to be competitive here. Yeah, those dismissals package, some good deliveries from both the quicks. But I think that ball, the first wicket by Ali Raza, really was the best amongst them. Slapped away towards the offside. There will be no run. Iftikhar looking to tread carefully. Shadab Khan has brought on himself on to break this partnership. Just a little bit room, and Iftikhar wanting to go for a big one. Not connecting well. Salman, his role is crucial. UMT Markhors will be banking on him. His solidity, he also has the ability to go big when the time arises, but he should be the rock right now. This is why it's crucial for Shadab. If he knocks Salman over right now, I think UMT Markhors will be in even bigger trouble. 14 gone, 52 for 4. A big fan following for Naseem Shah all over the country, but a lot of female fan following as well. I've seen in recent times. He has made waves wherever he has gone. Naseem Shah, will be seeing him in action later in the day as well. There he is. Smiling as always. He's carrying that old tradition of Pakistani fast bowlers being the heartthrobs. The history goes back to the great Fazal Mahmood, carried on by many, and Definitely Naseem Shah is the latest one. Yeah. Naseem Shah himself is a bubbly character. It's really fun to talk to anytime. Very, very good bowler. Good to see him back in full rhythm and fitness. Pakistan would need him in this busy season, both with white ball and red ball. Time for Ahmad, but seems good bowling conditions with the cloud cover. Ahmad being able to swing the ball both ways, but we'll have to see how he can keep up that pressure that was built by Hasnan and Ali Raza. At this stage, Lake City Panthers and Shadab Khan would be pretty happy with the way that they've bowled so far and fielded so far. Ahmad would be looking to just keep his line and length accurate, to not leak a lot of runs, because we know that both these batters can go big whenever given just a little bit of an opportunity.
keeping it straight on that occasion, Ahmad, but ball is skidding a little bit as well, as we've seen Iftikhar telling his partner. A few discussions on where they can go big, break the shackles. So Ahmad has bowled back of a length, a couple of deliveries. There's gully in place for him. Just the fuller length, a little bit of in swing into Iftikhar's pads. We watched it carefully. This is the ability that Ahmad Butt has. He also has a very good outswinger as well. Probably it's not a bad idea to give him a slip. The kind of dominance that the Lake City Panthers have at the moment. Just got a gully, a very fine gully. Then the interesting fielder is at square leg, just in front of square, 2/3 of the way, just to the right of your picture. A little bit of an uneven bounce we've been able to see. That one kept low than the ones before it. Salman Ali Agha not attempting to go for any runs on that occasion. He might not have as much pace as we've seen from Hasnain, but Ahmad has done really well with his variations. Job as a third seamer is a lot easier when you're coming in at 53 for 4 at the bowling crease, as opposed to a 70 for none or 80 for none in 14-15 overs. So Ahmad being so experienced, he would definitely realize what his role is and continue to build pressure. Fielder has gone slightly back, 10 yards further back at square leg. Chance, Saim Ayub in quickly, but Iftikhar was in. Good over from Ahmad Butt. UMT Markhors 54 for 4. Bit of turn from Shadab. We noticed that when we were down there that Shadab bowling from the Lyalpur Hall end will get some turn or any spinner, because it's more drier, more abrasive towards this side of the pitch where we're sitting, where Salman Ali Agha and Iftikhar are facing now. Shadab normally not a big spinner, but got that one to turn quite a lot. Although it was slightly shorter in length. Turn. It went aerial. Iftikhar living dangerously. He's turning the ball, like you said, Faisal. He's bowling into that patch. And that was definitely up in the air for longer than what Iftikhar would have wanted. And this time just a little bit of shift in crease from Iftikhar and guided it towards the cover areas for a single. Salman is obviously more confident and more comfortable against the spin.
especially the wrist spin, as opposed to Iftikhar. He nicely strides into that fuller delivery and gets a single. There's no harm. Shadab can actually attack Iftikhar a little bit more, probably a slip. I think you might get your wish here. We're getting a slip. Good call. Now he needs to just follow it with a good leg break, an edge, and that would have made things a lot interesting and easy. But yeah, obviously that part, the execution part, is not easy. Umar Sadiq in. Slightly shorter. Good work, Saim Ayub. 16 gone. UMT Markhors 57 for 4. Crowd in the background building steadily. The cloud cover has definitely made life easy for them as well in the stands. There's a little breeze blowing as well. Now we'll have to reload that one. Salman clearly not happy about something. Something to do with the side screen again. Yep, there's some movement behind. Salman shouts sorry to his mate. Well, they played together in quite a few teams, Salman and Ahmad Butt. Again, good length, keeping it straight, not giving them any room to open their arms and go for that big shot, which they're clearly itching for, we can see. Definitely, both these players are aggressive by nature. They would like to break free. The bowling has been good. The pressure is on, so there's no room for any errors for the batting side. You'd feel they've consumed all their lifelines with the kind of strokes they played early doors. It's a long time to rebuild and then launch. Some batting still left for the UMT Markhors. Nice and straight again. There was a leading edge. Iftikhar looking to go towards the leg side a little too early on that occasion. Clearly out of sorts, Iftikhar, but he's battling. You have to give him credit for that. He's not prepared to give it away. Like we all know, if he gets through this phase, things will get easier for him. And we know what a good striker of a cricket ball he is. That's better. Wouldn't be a bad idea to just revert to your red ball technique and play it another half an hour, 40 minutes, just as if it was a red ball game. I think that might be the message from the dressing room as well. There are still batters to come, but they will want Salman and Iftikhar to go as deep as possible. You have the youngster Abdul Samad, Sahid Mahmood, Naseem Shah to come. They can bring a lot of fireworks with them. It's a 50-over game. Shot on that occasion, pulled away by Salman, just for a single. Slightly longer tail there for the UMT Markhors. Not much after Samad. That's another thing that would be at the back of the mind of these two batters. They have to prolong this partnership.
Better from Iftikhar. Barrier Town Champions Cup. This very, very important game. Obviously, big prize at stake tonight. Play straight into the final. You can see the young Abdul Samad padded up. He would be the next to bat. Very important partnership this in context of this game. Good length on that delivery. And a very quick run to end the over. It's the 17 gone, 62 for 4. A hot and sultry but cloudy late afternoon in Faisalabad. And they are mounting a comeback. They are the most experienced pair in terms of the matches played and the abilities which they have got. Salman Ali Agha and Iftikhar. So far 37 runs in between them. Both have been in form, but tough going for them. They would like to take it deep and ideally see through to the end, or at least with the start of the last power play for UMT Markhors after losing away 4 wickets in quick successions. Yeah, that's a great shot by Salman Ali Agha. Width offered outside the off stump and some crucial runs to the total. 2 runs added. Maybe there was chance to come back for the third. A bit of late start would not do it for them. But no specific thinking on the part of Shadab, delivering way outside the off stump, maybe trying to purchase a wicket if Salman Ali Agha has a lapse of concentration. But so far, so good for him. Played perfectly according to the merit of the ball, bringing it downstairs, not allowing any hairy-fairy shots. It's a rebuilding stage at the moment for the UMT Markhors after they were reduced to 25 for 4. There's been a whole barrage of concentration levels from Salman and Iftikhar. Oh, that's a bit of turn there for Shadab. Brings a big smile on his face. Just keeps the batter thinking what all he has to deal with. No better time for a captain to bowl when you got 4 wickets within the first few overs, only giving away 25 runs. He's getting some turn, but Salman Ali Agha was waiting for that opportunity. Once again, way outside the off stump. The bat came downstairs. The result, another 4 for him. He's got 2 men there for the cut, but he's perfectly beat them both inside the 30-yard marker. There's too much width given, and nothing for those 2 fielders there who are looking to stop the boundaries if the ball is cut through offside. Salman is a good player of spin, and he'll bring that to the party today. It's 69 for 4. The clouds have been there, but very high up in the sky. No chance for rain. A bit of relief for the spectators and the players.
and a long walk for Salman Ali Agha and Iftikhar. But the way they have grabbed this opportunity, trying to take it deep, and that is going to be a question of concentration for both the players. Iftikhar on the other side is known for his heroics in the later part of the innings, but what most of us have not seen is the toil he go through in the listed cricket during the middle overs. He knows how to construct an innings and take it towards the deep end of the innings, and this is an opportunity but a big test for both of them. It's been a horrendous start for the UMT Markhors, losing 4 wickets in just no time. Lost Hasibullah when the score was 9, and they lost in form Kamran Ghulam, the score was 10. And a similar score, they lost their captain Rizwan, and 15 runs later they were 25 for 4. 3 wickets for Mohammad Hasnain, 1 for young Ali Raza. Runs here, probably be just 1. Faisalabad, little cloudy this afternoon, still no chance of rain, but a good opportunity for the spectators to have a cup of tea courtesy Tapal Daneda Tea Lounge, and a nice time to have it in the late afternoon, which is turning into finally a pleasant evening. We are into late September still. The summers have not gone by, waiting for the autumn to begin. Monsoon has retreated. That's a good single. Good call. They need to squeeze out runs wherever possible. And if you need anyone to rebuild an innings, you'll probably look for someone like Salman Agha, and he's there. Like how Iftikhar is batting, he's understood what's required of him, and he knows that his job is right now to reconstruct, and then in the last 10 he has to go berserk along with the batters to come, which will be a couple more. Nicely kept down. He wants to, he's running hard, Salman, and he wants to come back. Yes, that's his call, and they've completed it. Good running. Shadab has been continuing from the other end. 4 overs he has scored so far. Ahmad Wood came from the other end. He is also going to complete 4 of them. And maybe this would be the time when Shadab would start to think to get into other ideas to break this partnership. UMT Markhors had been building into a fight back, 2 runs away from 50 runs mark, this partnership, and nicely going for them. And we may see sooner rather than later a change in bowling from the other end. This is becoming far too easy if the initiative is not taken on part of Lake City Panthers. 19 gone, UMT Markhors 73 for 4. Good going for Shadab in this tournament so far on the back of 3 back-to-back wins. They qualified for the first playoff, and the crowd has been building up. The temperatures are expected to go down by the end of this evening, and we would like to see more people coming into Iqbal Stadium, Faisalabad. Shadab continuing from the far end after the brilliant spell of fast bowling from both the ends, perhaps the best of the lot so far into this Barrier Town Champion Cup. Now they would like to see some flurry of wickets to get rid of them, at least break this partnership. Good and decent crowd enjoying some great fast bowling spell, and now they have been waiting for a bounty of boundaries. Not to be so far. Abdul Samad yet to come with
a longer tail in terms of Saeed Mahmood and Asim Shah. They have the clear idea to take it deep. You talk about temperatures, it's showing 38 degrees and the feel factor is above 40. Even with the cloud cover, for some reason, for the past 4 or 5 days, Faisalabad has been burning hot. Big teams like the UMT Markhor, and big when I say is not about the names that are there, big teams in terms of their performances through the tournament, they will make sure that they fight it out. They're not going to go down easy. They were 25 for 4 and they're at it right now. And for Lake City Panthers, my worry would be when you have them 25 for 4 inside 10 overs, why you would have that pressure of not letting them bat 50 overs. Because if that happens, you've lost the initiative. Yeah, nonetheless, a great opportunity for Shadab to go through the motions and at least get into the rhythm of things. We saw him completing only 5 overs in the curtain raiser of this tournament, and since then he has not played in one game as well, but completed his allocated quota of full 10 overs in the next couple of games. Now he's coming on to ball with the backing of 4 wickets. These two are great players of spin bowling, and they are taking it easy as well. Another over gone quietly. Just 2 runs of over number 20 and 50 runs partnership for wicket number 5. 75 for 4. $75 for 4 after 20 overs. When you talk about 20 overs, you've seen Mohammad Hasnain bowling 5s, 6 for Ali Raza Ahmad, but 4 Shadab 5. Now they haven't yet brought in their 5th bowler. Who is that going to be? Mubassir is not playing this match, mind you. So the Lake City Panthers will have to go with either Rizwan Mahmood or Arafat Minhas. Now, Arafat Minhas has been given the ball now. I was just about to say that if he has to bowl, that he has to be given the ball in this period so that he finishes off with his 10 somewhere around the 30 if he bowls it at a stretch. In fact, around 40. So the right time, and mind you, UMT Markhors will look to attack him. Maybe after facing the first over, then they'll decide, because that is that link there where they'll look to score runs and try to take the pressure back onto the opposition. Arafat Minhas playing his 14th match, still early days in his career, 11 wickets for him and got loads of potential, but he is now up against 2 players who are brilliant batters of spin. Now after completing 50 runs partnership, they would like to make it big. We have seen an extraordinary partnership in a run chase by Hussain Talat and Tayyab Tahir, and that was a tailor-made case that how to build an innings and give a platform for the batters to come. And Iftikhar is otherwise known for his heroics in the last part of the innings, in the dying moments of the game, but this is what he has done in day out during the early days of his career. Off the back foot, more runs for Iftikhar. He is a good player of the spin bowling, which is rarely known when he has been thrown in the deep end in international cricket, when mostly the fast bowlers have been into the act. But I'm sure Lake City Panthers must be aware of the way they are going to keep the proceedings for next few overs. So matter who is going to blink first, Sikandar. Good start this from Arafat Minhas.
Good ball to end the over with. It's 21 gone, 77 for 4. That's a good ball. He's getting a bit of turn here. During this Perrier Town Champion Cup, one subplot would be that who is the captain who is taking the most initiatives and take the other team to the deep end in terms of taking the wickets. Shadab has been one of them. We have seen some good captaincy by Haris as well, bringing the innovation with abundance of leadership during the middle overs, trying to one fielder at a catching position. This is the moment where they could maybe afford another fielder in the slips, where the batter are not going for big shots. Last boundary came 22 deliveries ago. So the risk has to be taken to break into this partnership, knowing the way we have been talking about the batters to come. Nothing much left in their tank other than Abdul Samad. So either go for the kill or wait for the things to happen. Iftikhar scored heavily against Lake City Panthers in the season opener. He scored 57 of 44 deliveries. He came back to bat in the last 10 overs and scored more than 80 runs along with Abdul Samad in the last 5. Another good over from the Lake City Panthers. It's 79, in fact 80 for 4. Well, the connection camp, we've been talking about it. Pakistan team's elite players and some young players. Pakistan's head coaches across formats. The chairman of the Pakistan Cricket Board himself attended this connection camp. It's about having an open talk across the table. Everyone had their say, players and their needs. Way forward, coming 2025 and a busy season. And everyone shared their thoughts. And we spoke about this early, that an open talk is always good. The initiative is only going to produce positives. When you hear each other out, then that is the way, or the first step towards solving problems. So, talking about way forward for the year 2025, at least halfway through, we talk about how the current superstar players or the players can help create or bridge that gap between the youngsters and them and the people and the youngsters to come, so that you hand over the reins and keep playing for that star that is on your chest. And these are the things which have been discussed. Jason Gillespie were there, Gary Kirsten, David Reed, Pakistan's top players, Rizwan, Babar, Shaheen, even Saim Ayub, Saud Shakil. We'll come back to that. 81 for 4 after 23.
Yeah, Shadab continuing from the far end and talking about connection camp. One got to appreciate the way things were discussed. All were having that one unified vision and sitting on one table where so many variables are about to be discussed, the way things would unfold. We've talked about the workload management for the fast bowlers, the young players coming through the ranks. This Barrier Town Champion Cup have been an ideal facility for these youngsters to develop, those who perform, those who were just trying to rub shoulders with the experienced players. And also the way things were discussed, and not only a lot of discussion, but that was in the end summed up brilliantly by Gary Kristen, saying play for the name on the front of the shirt, not the back. So very action-packed and active days to come. And here comes the action from Salman Ali Agha coming down the track, making in full toss. And here comes the first sixer of the evening. Yeah, it's so important when you're under the pump and the bowling side has got you against the wall. You do cash out on the deliveries that are to be put away. Because yes, you lost 4 wickets early, but you got to move that scoreboard. First maximum of the match of the qualifier. It takes Salman to 40 of 62. Innings of concentration, skill. Yeah, he comes down and just works it around the onside. There are certain players around the world who like pressure situations. And for them, they say when nobody plays, that player plays. Last ball of the over. Good end for Shadab in the end. So UMT Markhors are 88 for 4. That's big, very big. Lands into the members. It was just a matter of time before Iftikhar could flex his muscles. Great use of the feet and taking on youngster Arafat Minhas. That's 2 sixes in the last 5 deliveries. Innings getting some momentum, approaching the halfway stage. Well, these two need to continue for a little longer, as I've been joined in by former Pakistan skipper Salman Bhatt in the comm box. Good evening, Salman. Thank you, Shaji. Good evening, and good evening to all the viewers. This is a partnership that is developing and now looking to break the shackles. Salman on 40, Iftikhar on 33. Both have weathered the initial storm, and now they are in a position where they should develop this partnership further and blossom this into a platform where at the end they can capitalize. It's important that they keep rotating, picking up the odd boundary, avoid any unnecessary risks, at least till over number 40. That will be the key, how they end this innings. Because remember, this is a tournament, and when you come to the playoffs or the semi-finals or the final stages, the average scores are not as high.
It's 25 gone, 97 for 4 UMT Markhors. Complete catastrophe at the top, but now the resurrection has been done. Partnership needs to grow in stature from here because it's only up to Samad left, and then there's quite a long tail. Naseem could bat, but then Zahid and the rest. Beautifully bowled. Saim Ayub getting the ball to turn. We've seen consistent turn from that far end where Saim is bowling from. Yeah, and the reason for that is no grass. Where Iftikhar is batting, there are bare patches. In fact, it's completely bare, not patches. So the other side has some grassy patches, but this one, this end is totally bare. And this is put over mid-wicket. Fielder has a chase, but he won't be able to cut this off. A boundary, and it takes the UMT Markhors across 100, and Iftikhar goes to 42. Or 38, yeah. Using the depth of the crease, Iftikhar. He's found his rhythm in the last 15 minutes or so. .38 now. Iftikhar catching up with that strike rate. It shouldn't be an issue with Iftikhar, the kind of ball striking he's known for. Lake City Panthers have really done well so far, though. Those early 4 wickets have rocked the UMT Markhors. .26 gone, 102 for 4. Wickets for Hasnan yet again. He's been prolific in this tournament. Young Ali Raza, once again, a very, very impressive performance from him as well. The pressure has been kept by the other bowlers. Shadab has gone through 7 of his overs. Yes, he's done that in good time, but rather than go to Saim, I would have gone back to Hasnan, because you don't want the opposition to play the 50 overs from here onwards. And going for the kill is the absolute way to go, because if you let Iftikhar and Salman Agha bat till the 40th, and if Samad has a good day, then all those 4 wickets up in the power play would mean very little. And that is where Shadab has to make sure. And now it's actually what we were talking about. It's Hasnan going to come up. That is good to see. What do you make of the choice of end for Hasnan as well? Like you said, spinners are getting the ball to turn from that far end. You happy with him bowling from this end? Yes, he has taken wickets from this end, so why would he change? And I guess the spinners are also happy from the other side. So it's happy days for everyone. Because after Hasnan, Ali Raza bowled from this end as well. And he was pretty sharp. He was hitting the splice pretty regularly. The pitch has had a rest day, and it looks very compact. We spoke about it. Seemed hard, and we've certainly seen some good bounce. And the overcast, maybe it has also helped the bowlers a little bit, because when we were at the toss, there was just a little bit of cloud. But later on, it's been a cloud cover. And the fielders
Well, they've had some sort of an easy time in this tournament under the clouds. There you go. It's pretty early in the evening, but the floodlights are taking full effect because of the cloud cover. It's 4:45 actually, which is way too early for the lights. On a normal sunny days, this one is taken Iftikhar's pad. It was down pretty straight. Iftikhar would have feeling that he's missed out there. Generally, the lights are turned on in previous games at around 5:20. Today, because of the cloud cover, still pretty muggy though. Good swing bowler can exploit these conditions too. Iftikhar calls. Salman responded. Rashid Riaz will go upstairs. Well, direct hits can surprise everyone. From the look of it, Iftikhar has reached safely, but again, it's a direct hit. And Iftikhar also had to take a longer route. It's the umpire referring it to the third. And we shall know in a few seconds. There we have it on our screens. And it will be curtains for Iftikhar. Maybe a dive could have saved him, but this seems that he has to go. Yes, surely he has to go. So as we spoke about the direct hits, they can surprise, and here is one. And if we see him running, I think he has taken the longer route, which has affected his, obviously this dismissal has been affected due to that longer route. Third umpire Asif Yaqub had to make the call, and Iftikhar will walk back dejectedly as this partnership was taking shape. Iftikhar was finding his range against the spinners. Sluggish piece of running would mean that he will have to depart for 39. And UMT Markhors half the side back in the hut for 102. Abdul Samad, what a stage for him. He's been the talk of the town, but this could be the biggest night of his career if he comes good. 25 games, 798 runs at average, just touching 40, 200s as well, best of 130. Pretty much close to his best is required today. Surely is. Lots of overs still remain, nearly half of them. It's Hasnan, the man with his tail up, the highest wicket taker of the Barrier Town Champions Cup, has the ball in hand and the things going for him. And the batters have their work cut out facing Hasnan. Oh, this one goes past the inside edge, and there is some problem in front of the crease, and straight away the batter, he raises his hand and points out the problem that he had. And there is somebody who is really thinking differently. He has no concern of what is going on in the middle. And Salman was upset, rightly so, just as the bowler was in his delivery stride. So just have a look how he goes about this run. Just have a look at him. Firstly, and then in the end, he deviates away to his right side, making the distance longer. In the end, he ran to his right, and hence the distance increased. Hasnan once again very impressive. Wicket in the over, which didn't belong to him, but his control has been good, line and length's been good. And obviously Salman Ali Agha, with the loss of his partner, will have to rebuild at another partnership. Look at how Iftikhar has gone. Yeah,
just at the end over there, he runs to his right and he makes his own distance longer, and by a very small margin is given out. So that is where the youngsters watching this dismissal, the value of running in straight lines. It just keeps your distance as it is. So another good over from Hasnan. A wicket made in, but the wicket coming via run out. 3 for 16 he has, and Markhors 102 for 5. Huge challenge for Samad, but a huge opportunity as well. Slip in place, Syme with his mystery. Got a short cover catching as well. Yes, important for him to stick around and develop this partnership with Salman Ali Agha, who really has been a man of crisis in this tournament. Every time he's come in, he's held the ship, he's put up a partnership, and again plays, trying to get it through the third, but couldn't find the gap. Salman Agha, 51 in his second game, 49 in the third, and 69 in the fourth, and today 41 again. So he's been the Mr. Consistent of UMT Markhors, and he's also bowled well in this tournament. So somebody who also has a quarter key of this Barrier Town car standing over there. Not easy though for Samad. Not much to come after him, so he'd have to be very careful in his shot selection. At the same time, he doesn't want to get bogged down, doesn't want to keep Salman starved for strike, who's in good rhythm. Samad will get his first run and would not come back for the second.